तो हेलो व्हाट्सअप, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से फुटबॉल इन ब्लड पे। और एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए आईएसएल का आंखों देखा हाल। और आज का मैच दोस्तों सदर्न डर्बी होने वाला है, जो कि होने वाला है केरला ब्लास्टर्स और बेंगलुरु एफसी के बीच में। तो मैच जो है दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अटैक से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे बेंगलुरु एफसी का किक ऑफ हुआ था। यहाँ पे उदांता सिंह वापस से लाइनअप में आ चुके हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग को एक नए चेहरे जो केरला ब्लास्टर्स के लाइनअप में ऐड किया गया था सीडो के जगह पे, उनको यहाँ पे शॉट आता हुआ पारतालू का, मगर सीधा यहाँ पे पावर शॉट नहीं था, पावरफुल शॉट नहीं था और शॉट सीधा जहाँ पे एल्बिनो गोम्स इजीली कलेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे अटैक से शुरुआत कर दी है बेंगलुरु ने। अपनी जो मनोकामना है वो ज़रूर यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो वो स्टार्टिंग ऑफ द मिनट से जो मेंटालिटी लेके उतरे हैं पिच पे, और यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स क्या अपना विनिंग परफॉर्मेंस जो है, अपनी विनिंग मोमेंटम जो है वो क्या बरकरार रख पाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट देखना हमारे लिए। और जो प्लेयर जो नाम मैं बोलने वाला था केरला ब्लास्टर्स के लाइनअप में जो कि ऐड हुआ है वो है जुवंदे, और सीडोंचा के बदले उन्होंने केरला ब्लास्टर्स ने इनको साइन किया है। और यहाँ पे फ़िलहाल तो यहाँ पे हमें शायद मिडफील्डर और डिफेंस के रूप में हम लोग को यहाँ पे दिख सकते हैं जोआनन जो है, जुवंदे माफ़ करिएगा, जोआनन तो बेंगलुरु एफसी के डिफेंडर हैं। और तब तक के लिए यहाँ पे टीम की शुरुआत जिस तरीके से हुई है अटैकिंग के साथ, उस तरीके से लग तो रहा है कि बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के पास फ़िलहाल तो अब बॉल पोजीशन क्लिंटन सिल्वा, यहाँ पे एरिक पारतालू ढूंढना चाह रहे थे वहाँ पे अजीत को, मगर वहाँ पे कटआउट आता हुआ। इंटरसेप्शन बहुत बढ़िया राहुल केपी को एक बार फिर से यहाँ पे शुरुआत दी गई है। और यहाँ पे सहल का भी आज वापस से परफॉर्मेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि क्या वो अपना जो क्वालिटी है वो मेंटेन रख पाते हैं कि नहीं, जो उनका परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंसी अपना परफॉर्मेंस में दिखा पाते हैं कि नहीं। तो तब तक के लिए यहाँ पे वापस पिच में दिखाई देता हुआ कि फ्री किक मिलता है। विसेंते गोमेज को यहाँ पे डाउन किया अजीत ने। अजीत दोस्तों जो है वो आशिक की जगह पे यहाँ पे खेलने उतरे हैं, क्योंकि आशिक जो है चोटिल हो चुके हैं और अजीत को लेफ्ट बैक की यहाँ पे भूमिका निभानी पड़ेगी, जो कि आशिक कुरुनियन खेलते थे बेंगलुरु एफसी के लिए। तब तक के लिए यहाँ पे फ्री किक मिलता हुआ यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स सहल अब्दुल समल शॉट लिया वहाँ पे, मगर बहुत बढ़िया इंटरसेप्शन बेंगलुरु एफसी के डिफेंस द्वारा। और वापस से केरला ब्लास्टर्स ने बॉल को पोजीशन में रख लिया है, क्रॉस आता हुआ, बॉल सीधा बाहर जाता हुआ और अटैक यहाँ पे थमता हुआ। और बहुत बढ़िया, अभी 2 मिनट के गेम में हमें दोनों साइड से एक अटैक देखने को मिल चुके हैं और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैच तो बहुत तगड़ा स्टार्ट हुआ है, सदर्न डर्बी ऐसा ही नहीं कहते इसको। तो स्टार्ट तो उसी धमाकेदार तरीके से हुआ है, और अगर हम लोग को यहाँ पे स्टेडियम में फैंस देखने को मिल जाते तब तो और भी मज़ा आ जाता, मगर वर्चुअल फैंस ज़रूर है हमारे पास, तो उनके भी रिएक्शंस हम ज़रूर देखेंगे यहाँ पे। और हमारे साथ हमारे रिएक्शंस तो आप देख ही रहे होंगे, तो मैं तो आपके साथ बना ही रहूँगा। लेकिन अगर आपको आईएसएल का लाइव मज़ा लेना है, डिस्कॉर्ड पे जाइए। डिस्कॉर्ड के लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में और लाइव चैट पिन चैट में दिख जाएंगे, और वहाँ पर से आप जो है आईएसएल का इस मैच का लाइव मज़ा उठा सकते हैं। डिस्कॉर्ड में जाके हमारे सर्वर में जुड़िए, वहाँ पे लाइव आईएसएल टेलीकास्ट की जा रही है। और अगर आपको कमेंट्री सुनना है तो हमारे साथ बने रहिए, और पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि हर एक आईएसएल मैच से आप हमारे साथ जुड़े रहें और आईएसएल का मज़ा उठाते रहें। तब तक के लिए यहाँ पे सुरेश वंगजुंग खेल दिया है वापस से गुरप्रीत सिंह संधू को, और लॉन्ग किक आती हुई गुरप्रीत सिंह संधू की यहाँ पे कोस्टा का बहुत बढ़िया इंटरसेप्शन आता हुआ। कैरी हुपर यहाँ पे आज देखना पड़ेगा किस तरीके से कमाल करते हैं अभी अटैक बनाते हुए केरला ब्लास्टर्स की टीम। संदीप सिंह मिडिल ऑफ द पेनल्टी बॉक्स में खेला, यहाँ पे सहल के पास यहाँ पे बॉल है, देखते हैं क्या करते हैं। सहल पास किया है, चांस बन सकते हैं यहाँ पे, मगर अजीत का इंटरसेप्शन, यहाँ पे राहुल भेके का क्लियरेंस, हल्का सा क्लियरेंस रहा, पावरफुल शॉट नहीं था। तब तक उदांता सिंह को यहाँ पे डाउन कर दिया है सहल अब्दुल समद ने, और यहाँ पे फाउल यहाँ पे जीतते हुए बेंगलुरु एफसी बहुत नज़दीक आ चुके थे यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स की टीम जो है, मगर यहाँ पे बाल जो है वो स्कोर नहीं की। 1-1 पास अच्छा खेला गया था यहाँ पे पेनल्टी बॉक्स के अंदर, मगर यहाँ पे चांस जो है वापस से मिस होता हुआ यहाँ पे। और केरला ब्लास्टर्स और बेंगलुरु एफसी दोनों का ही अभी स्कोर लाइन जो है अभी 0-0 आपको नजर आएगा। तो स्टार्टिंग दोनों की तरफ से ही बहुत बढ़िया हुई। स्टार्टिंग के 5 मिनट में अभी तक बेंगलुरु ने एक चांस बनाया और
केरला ब्लास्टर्स ने 2 चांस बना दिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ये भी देखने को मिल रहा है हमें कि केरला ब्लास्टर्स किस तरीके से अपना फॉर्म जो है वो बरकरार रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे बेंगलुरु को कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे आज के मैच में। और यहाँ पे मूसा जो बेंगलुरु एफसी के यहाँ पे हेड कोच है इस बार अब के समय में, क्योंकि क्वाद्रत बता देते हैं दोस्तों, क्वाद्रत जो है वो उनको सैक कर लिया गया था लगातार 3 हार के बाद। तो इसके बाद मूसा जो है अपने इंडियन फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं, वो हैं अभी कोच बेंगलुरु एफसी के। और कहीं ना कहीं जीत की तलाश करते हुए यहाँ पे बेंगलुरु एफसी आज के मैच में ज़रूर, और साथ ही साथ केरला ब्लास्टर्स भी ज़रूर चाह रही होगी कि वो को बहुत देर से ये मोमेंटम बनाने की वेट थी कि केरला ब्लास्टर्स कब विनिंग मोमेंट में आए, विनिंग की मोमेंटम बना के रखे, बरकरार रखे। आज के मैच का भी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक एल्बिनो गोम्स दोस्तों, एल्बिनो गोम्स का यहाँ पे शॉट आता हुआ, आज एल्बिनो गोम्स पे भी सबकी नज़रें रहेंगी। गुरप्रीत सिंह संधू के साथ वहाँ पे आज उनकी टक्कर है एक तरीके से, गोलकीपर टू गोलकीपर ज़रूर एक स्टैट्स की टक्कर रहती है कि कौन कितना सेव कर रहा है। और गुरप्रीत सिंह संधू हमारे नंबर 1 गोलकीपर इंडिया के, और उसके साथ ही साथ आईएसएल के कह सकते हैं कि नंबर 1 गोलकीपर एल्बिनो गोम्स जो काफ़ी सेव्स कर चुके हैं और केरला ब्लास्टर्स के लिए, और काफ़ी पेनल्टीज सेव किया है उन्होंने इस आईएसएल में, तो वो भी काफ़ी यहाँ पे फेमस इस सीज़न में। तो यहाँ पे बहुत दोनों ही गोलकीपर के बीच में यहाँ पे एक हल्की फाइट ज़रूर रहेगी। तब तक गैरी ऊपर के पास बॉल राहुल केपी को खिला दिया है। राहुल केपी ने यहाँ पे विसेंते गोमेज को ढूंढा है, यहाँ पे वापस सहल अब्दुल के पास बॉल आता हुआ लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनाते हुए, बहुत बढ़िया डमी दिया वहाँ पे, मगर सहल का वहाँ पे जो पास था वो दिशाहीन। और यहाँ पे बॉल जो है बेंगलुरु एफसी के पास आता हुआ, यहाँ पे बॉल पोजीशन यहाँ पे कीटन सिल्वा यहाँ पे लेफ्ट फ्लैंक से राइट फ्लैंक की तरफ ढूंढ लिया, यहाँ उदांता या फिर सुरेश वांगजम का यहाँ पे ढूंढा है और बॉल रिसीव नहीं कर पाए। हालांकि लॉन्ग बॉल खेला गया था, फ्लैंक स्विच किया गया था, मगर बॉल जो है सीधा बाहर गया और यहाँ पे एक थ्रो इन का इशारा करते हुए रेफरी, और केरला ब्लास्टर्स के पास यहाँ पे थ्रो इन। मैती यहाँ पे आज खेल रहे हैं दोस्तों, और जेसल भी नहीं खेल रहे आज, निशु कुमार भी नहीं खेल रहे हैं दोस्तों। तो केरला ब्लास्टर्स के लिए डिफेंस लाइन में यहाँ पे दो हम लोग को सबसे चेंजेस देखने को मिले हैं लास्ट मैचेस से। निशु नहीं खेल रहे हैं, जेसल नहीं खेल रहे हैं, मैती खेल रहे हैं उनके जगह पे, प्लस निशु के जगह पे जुआंदे खेल रहे हैं शायद। तो यहाँ पे इन केरला ब्लास्टर्स की भी यहाँ पे डिफेंस ज़रूर कहीं ना कहीं टेस्ट की जाएगी। नई डिफेंस है यहाँ पे, एक तरीके से 50% प्लेयर जो हैं वो न्यू खेल रहे हैं, जो कि लास्ट फॉर्मेशन में यहाँ पे नहीं खेले थे। यहाँ पे तब तक के लिए एक बहुत बढ़िया क्लियरेंस विसेंते गोमेज नहीं जोआंदे का यहाँ पे इंटरसेप्शन था, बहुत बढ़िया यहाँ पे, बहुत बढ़िया यहाँ पे बॉल फॉरवर्ड किया है उदांता सिंह को सुरेश वांगजम ने, मगर यहाँ पे कोस्टा का उतना ही अच्छा बॉल रिकवरी इंटरसेप्शन आता हुआ वहाँ पे। यहाँ पे विसेंते गोमेज और जोआंदे काफ़ी हद तक सिमिलर दिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पहचानने में मुश्किल होगी, जर्सी नंबर जब तक हमें दिखती नहीं है। तो फ्लैंक स्विच होता हुआ यहाँ पे राहुल केपी को यहाँ पे बहुत बढ़िया रिसीव राहुल केपी का ढूंढ लिया, लेफ्ट से राइट में यहाँ पे फ्लैंक स्विच किया गया था मैती का, और उतना ही अच्छा रिसीव वहाँ पे दिखता हुआ हमें राहुल केपी का। दोस्तों राहुल केपी एक बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल प्लेयर और अंडर 17 में खेल चुके हैं, आपको याद होगा, और बहुत सारे प्लेयर बोरिस, फिर बाद में आपके कोमल और धीरज, जैसा कि धीरज के तो आपने नए न्यूज़ सुने ही होंगे कि एफसी गोवा में उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया है, तो एफसी गोवा गौर्स बन चुके हैं धीरज सिंह हमारे। और एटीके मोहन बगान में कई वर्ष मतलब 2-3 सालों से ज़रूर थे, लेकिन स्टार्ट नहीं मिला था, एक मैच आई थिंक, हालांकि एक ही मैच शायद खेलने को मिला था उन्हें, और यहाँ पे हो गया है परमानेंट, आई थिंक यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। और यहाँ पे हेलो विनीत ब्रो, हेलो और वेलकम टू द स्ट्रीम। और आईएसएल का ज़रूर मज़ा उठाइए, आपको कमेंट्री अच्छी लग रही है तो मेरे साथ चिट चैट बात कर सकते हो। आज की स्कोर लाइन प्रिडिक्ट कर दो यार विनीत, और देखते हैं कि किस तरीके से होता है रिजल्ट दो या 90 मिनट्स में, आपको क्या लगता है। और आप जिस टीम को सपोर्ट या फिर कर रहे हो तो ज़रूर आप टीम का नाम लिख के हैशटैग टीम का नाम ज़रूर लिख सकते हो, तो दोनों ही कर सकते हो, तो बिल्कुल करो। और तब तक यहाँ पे पिच पे वापस आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे लाइव स्ट्रीम थोड़ा सा यहाँ पे डिले चल रहा होगा, तो
यहाँ पे मे भी शायद आपका चैट जो है मैं थोड़ा सा कुछ देर बाद में देखूँ, मे बी या फिर मतलब कुछ देर बाद रिप्लाई शायद आपको आए, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पे देख रहा हूँ और आपको ज़रूर यहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मे बी शायद थोड़ी बहुत फ्लो में बात करते करते फ्लो में इधर उधर खो जाता हूँ, लेकिन एक बार मैं चैट देख के ज़रूर एक बार आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक यहाँ पे चांस बनता हुआ यहाँ पे उदांता सिंह का बॉल, सुरेश वांगजम का बॉल क्लिक सिल्वा के लिए, मगर यहाँ पे फाउल अर्जित होता हुआ और सिल्वा काफ़ी नाखुश यहाँ से। और देखते हैं क्या होता है। चांस बनता हुआ सुनील छेत्री, आज सुनील छेत्री का गेम आज स्कोर करना ही पड़ेगा सुनील छेत्री को। अगर बेंगलुरु एफसी को यहाँ पे जीत दर्ज करना है तो या तो असिस्ट या तो एक गोल ज़रूर कर दागना होगा बेंगलुरु एफसी के लिए यहाँ पे सुनील छेत्री को, और बेंगलुरु एफसी को विनिंग वेज में ज़रूर लेके आना होगा। कम से कम आज के मैच में ज़रूर करना होगा सुनील छेत्री को ये। और अजीत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ्री रोल में यहाँ पे खेलते हुए राइट बैक लेफ्ट बैक के प्लेयर हैं, आशिक कुरूनियन के जगह खेलते हैं, मगर यहाँ पे काफ़ी फ्री रोल यहाँ पे हमें दिखता हुआ अजीत का। यहाँ पे चांस बनता हुआ, शॉट लिया मगर बॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाता हुआ। यहाँ पे सुरेश वांगजम का शॉट यहाँ पे क्लियरेंस की तरह शॉट चला गया, पेनल्टी बॉक्स से वहाँ पे शॉट लिया था, फर्स्ट टाइम शॉट लिया था, बॉल ड्राइव करके वहाँ पे आ रही थी, एक डिफ्लेक्शन से आ रही थी वहाँ पे, मगर शॉट नीचे नहीं रख पाए और सीधा बॉल जो है गोल किक बाहर ऑफ टारगेट होता हुआ और यहाँ पे गोल किक मिलता हुआ केरला ब्लास्टर्स एफसी को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मंथ सुरेश वांगजम को मिल चुका है। यहाँ पे दिसंबर में याद दिलाना चाहूँगा कि जो मैचेस है आईएसएल के वो नवंबर स्टार्टिंग में हुआ था, नवंबर से ही स्टार्ट हुए थे, 20 नवंबर से हुए थे, लेकिन यहाँ पे दिसंबर में जो है दिया गया था सारे अवार्ड्स और उसमें सुरेश को यहाँ पे दिया गया था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मंथ, जो कि दिसंबर में दिया गया था। और काफ़ी प्रभाव किया इन्होंने बेंगलुरु एफसी के लिए, वर्क फोर्स है एक तरीके से, पावर हाउस है एक तरीके से। यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे आई थिंक जी नहीं ठीक है सब कुछ यहाँ पे सुन यहाँ तो यहाँ पे कॉर्नर है दोस्तों यहाँ पे, और देखते हैं कि क्या होता है इस कॉर्नर में। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी रेफरी से बकझक होते हुए, और जी नहीं यहाँ पे साल अब्दुल का क्रॉस आता हुआ थोड़ा सा फर्स्ट पोस्ट पे रह गया, हेड इन किया है यहाँ पे, कोस्टा का शॉट यहाँ पे बाहर जाता हुआ, और यहाँ पे बाल यहाँ पे बचती हुई, यहाँ पे जो चांस है एक बार गवाती हुई, और बहुत क्लोज आए थे यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स एफसी की टीम यहाँ पे स्कोर करते करते, मगर यहाँ पे बैक वॉली मार रहे थे गैरी ऊपर, यहाँ पे बाइसाइकिल किक मार रहे थे और यहाँ पे मिस हुआ वहाँ पे। और कोस्टा का जो शॉट है काश यहाँ पे टारगेट पे रह जाता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन किसी तरीके से वहाँ पे बचा और यहाँ पे बेंगलुरु एफसी किसी तरीके से बची। यहाँ पे बेंगलुरु एफसी स्टार्टिंग में मिस पास बहुत कर रही है और दोनों ही टीमें अभी उतनी अच्छे से स्टेबल नहीं हुई, लेकिन केरला ब्लास्टर्स से हमें अटैक ज़रूर देखने को मिला। राहुल के पी यहाँ पे राइट फ्लैंक में अजीत को से बॉल लिया, मगर यहाँ पे फाउल भी कर दिया तब तक के लिए, और मिस हुआ वहाँ पे थोड़ा सा। आई थिंक ड्रिबल करना चाह रहे थे, मगर यहाँ पे
सही से ट्रिबल हुआ नहीं और ट्रिप कर दिया उन्होंने अजीत को, बेंगलुरु एफसी के डिफेंडर को। तो यहाँ पे चांस जो है वापस एक वेस्ट होता हुआ केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए। गुरप्रीत सिंह संधू यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग किक लिया, इंटरसेप्शन वहाँ पे राहुल के पी का इंटरसेप्शन आता हुआ यहाँ पे। और देखते हैं कि अभी तक स्टेबल कोई टीम हुई नहीं, अभी तक स्टार्टिंग 15 मिनट्स हो चुके हैं। चांसेस अभी तक केरला के लिए 3 चांसेस अब तक मिल चुके हैं। बेंगलुरु के लिए अभी तक कोई क्लियर चांस नहीं मिला है जो कि पेनल्टी बॉक्स के अंदर ऐसा देखने को मिले हमें। चांसेस थर्ड बॉल जो फाइनल बॉल है पेनल्टी बॉक्स में पहुंचने से पहले वहाँ पे यहाँ कट आउट किया गया, इंटरसेप्शन किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को ज़रूर यहाँ पे मिल सकता है कि किस तरीके से यहाँ पे बेंगलुरु एफसी और थोड़ा अपनी अटैक को बढ़ाती है और यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स अब किस तरीके से जो चांस मिल रहे हैं उन्हें वो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये यहाँ पे थ्रो इन आएगा, लॉन्ग थ्रो इन आएगा, जिन्हें शॉर्ट थ्रो इन ही कर दिया, सुनील छेत्री को यहाँ पे थ्रो इन किया। और यहाँ पे बॉल जो है आई थिंक बाहर जाता हुआ, यहाँ पे गोल किक की तरफ बॉल जाता हुआ और केरला ब्लास्टर्स के लिए एक गोल किक यहाँ पे। तो अब तक दोस्तों 3 चांस अभी तक इस 15 व 16 मिनट के गेम में जो है 3 चांस केरला ब्लास्टर्स को मिल चुका है, मगर कन्वर्जन नहीं हो पाया है। और बेंगलुरु को एक चांस थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि मिला था, पेनल्टी बॉक्स के सामने से एरिक पातालू ने शॉट लिया, पावरलेस शॉट था वहाँ पे, हाफ हर्टेड शॉट लिया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे टोटली मिस हुआ। तो मतलब एल्बिनो गोम्स वहाँ पे उन्होंने सेव किया था। और यहाँ पे स्कोर लाइन अभी भी 0-0। देखते हैं कौन सी टीम जो है यहाँ पे पहले यहाँ पे स्कोर करती है। तब तक के लिए यहाँ पे ऑफ साइड है होगा शायद यहाँ पे, और एल्बिनो गोम्स यहाँ पे आई थिंक थ्रो इन हो गया यहाँ पे। जी हाँ, बॉल जो है वो मरे को देना चाह रहे थे लेकिन बॉल सीधा थ्रो इन की तरफ चली गई। तब तक के लिए यहाँ पे स्टार्ट करते हुए बेंगलुरु एफसी पोजीशन बॉल के पास बॉल रखते हुए यहाँ पे चांस बना है, यहाँ पे गैरी हुपर के पास बॉल है, पास देना चाहे और एक चांस बना है, हाफ वॉली लिया, बॉल ऑफ टारगेट जाता हुआ। और चौथा मौका यहाँ पे और एक जो केरला ब्लास्टर्स के पास बना था, बहुत बढ़िया चांस बना था, ये मिस होता हुआ दोस्तों। तो एक बार लेकिन ज़रूर केरला ब्लास्टर्स के फैन देख रहे हैं अगर, तो ज़रूर एक बार चैट में #KeralaOP कर दीजिए और अपनी टीम को सपोर्ट करिए, तो जल्दी से जल्दी ये जो चांसेस है वो जो है कन्वर्ट हो जाए और केरला जो यहाँ पे लीड ले ले। क्योंकि 4 चांसेस अभी तक मिल चुके हैं केरला को, पेनल्टी बॉक्स के अंदर मिले हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं आया है हमें। और यहाँ पे बेंगलुरु एफसी पोजीशन को यहाँ पे मेंटेन करती हुई सुनील छेत्री, बॉल उदांता को दिया था मगर उदांता ने यहाँ पे छोड़ा, वहाँ पे पता नहीं किसके लिए छोड़ा। और यहाँ पे बॉल जो है वापस केरला ब्लास्टर्स के पास गया, लॉन्ग बॉल ढूंढना चाहे यहाँ पे हुपर को, मगर बेंगलुरु एफसी के डिफेंडर ने जॉर्डन बढ़िया यहाँ पे इंटरसेप्शन की। और पोजीशन जो है बेंगलुरु एफसी के पास अभी एरिक पातालू यहाँ पे जॉर्डन को खेल दिया है। धीरे धीरे यहाँ पे बिल्डअप करते हुए देख रहे हैं, अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। सुनील कीर्तन सिल्वा को यहाँ पे खेला, अजीत के पास बॉल, वापस एरिक पातालू बैक पास करते हुए यहाँ पे, और गोंजालेस को यहाँ पे खेला था, राहुल भेके एक मैन को बीट करते हुए यहाँ पे सहल अब्दुल को वापस यहाँ पे ड्रिबल करते हुए जा रहे हैं। अब ऑप्शन ढूंढना चाहेंगे, यहाँ पे मिस होता हो यहाँ पे राहुल भेके से, और यहाँ पे विसेंते गोमेज और सहल ने यहाँ पे डिस्पोजेस किया राहुल भेके को। राहुल भेके वापस अपने लाइन में जाते हुए, और केरला ब्लास्टर्स के पास बॉल पोजीशन, गेम को थोड़ा सा स्लो करते हुए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप और पोजीशन ज़रूर यहाँ पे बनाना चाह रहे होंगे। कोस्टा धीरे धीरे पास करते हुए अपने साथी जिक्सन को वहाँ पे, और राइट फ्लैंक में बॉल, कोस्टा यहाँ पे थोड़ी सी गेम यहाँ पे स्लो हो गई है दोस्तों, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से वो केरला जो है लॉन्ग बॉल यहाँ पे खिला दिया है, बहुत बढ़िया यहाँ पे ऊपर को ढूंढा, मोरे को पास किया, यहाँ पे मोरे ने यहाँ पे बॉल बैक पास कर दिया है। यहाँ पे सहल अब्दुल के पास बॉल है, यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ऑप्शंस ढूंढ लिया है। यहाँ पे 1 टच खेल रही है केरला ब्लास्टर्स की टीम, बहुत बढ़िया बैक से बिल्ड कर रही है यहाँ पे अटैक, और कहीं ना कहीं ये याद दिलाता है हमें FC गोवा की टीम जो करती थी। और हम लोग स्टार्टिंग में बोल भी रहे थे कि वो किस तरीके से यहाँ पे करते हैं, जो गेम
राहुल केपी के पास बॉल, ट्रिपल करते गए, एक प्लेयर को यहाँ पे बीट किया मगर दूसरे प्लेयर को बीट नहीं कर पाए, और बेंगलुरु एफसी जो है इंटरसेप्शन करती हुई यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे फिजिकल बैटल दिखता हुआ हमें मैती और यहाँ पे सुरेश वांगजम के बीच में। और आज रियली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों सदर्न डर्बी में। जिस तरीके से सहल को यहाँ पे भेके ने बीट किया था, सहल ने ट्रैक बैक किया और उसके बाद विसेंते गोमेज के साथ मिल के वहाँ पे राहुल भेके को डिस्पोजेस किया। राहुल भेके पास किसी को दे पाए उससे पहले ही उन्होंने जो है बॉल यहाँ पे छीना सहल अब्दुल समद ने, और ये दिखाता है कि किस तरीके से सहल जो है अपना गेम जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले सिर्फ अटैक में नहीं जा रहे हैं, अभी ट्रैक बैक भी कर रहे हैं। तब तक के लिए यहाँ पे एक मिस पास जो है वो डिफ्लेक्शन राहुल भेके के पास यहाँ पे आता हुआ, और बेंगलुरु एफसी के लिए यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स की जो टीम है वो एक अटैक बना रही थी मगर यहाँ पे मिस पास हुआ और बेंगलुरु एफसी के डिफेंडर राहुल भेके ने यहाँ पे बॉल को कलेक्ट किया है। गाइस जल्दी से जाइए और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए यार। मैच जो है लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और यहाँ पे लाइव आईएसएल का मज़ा उठा सकते हैं डिस्कॉर्ड में, तो जल्दी से डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए। और अगर आपको कमेंट्री सुननी है तो फिर मेरे साथ बने रहिए। और पिच पे वापस आते हैं, सहल के लिए ओपन चांस है, यहाँ पे शॉट ले सकते हैं, पास दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया कवर यहाँ पे और बहुत नज़दीकी मामला 1-on-1, बहुत नज़दीकी थे वहाँ पे 1-on-1 से, मगर डिफेंडर्स बेंगलुरु एफसी के यहाँ पे बाल वहाँ पे ट्रैक बैक किया उन्हें, और सहल को कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया कि किसी को भी पास दे सकें, और बहुत ही बढ़िया वहाँ पे चैलेंज। तब तक के लिए यहाँ पे उदांता सिंह के पास यहाँ पे बॉल है, शॉट लिया है एल्बिनो गोम्स के पास, सीधा कलेक्ट करते हुए, सीधा शॉट एकदम, और एल्बिनो गोम्स इजीली कलेक्ट करते हुए वहाँ पे बॉल। और काफ़ी नाखुश होंगे वहाँ शायद सुनील छेत्री की क्यों बॉल पास नहीं किया। और दोनों ही तरफ से दोस्तों यहाँ पे चांस बहुत बढ़िया आता हुआ, और दोनों टीम यहाँ पे दो अटैक बना रही है। कन्वर्जन अभी तक नहीं आया, हमें 0-0 का स्कोर लाइन दिख रहा है, मगर दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छा फुटबॉल यहाँ पे खेलते हुए। और अगर आपको इसी फुटबॉल का मजा लेना है तो जल्दी से जल्दी जाइए और डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा ज्वाइन करिए। लाइव स्ट्रीम वहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे आपको कमेंट्री सिर्फ मिलेगी, और मैं पूरी तरीके से ट्राई करूँगा कि जो भी मैं यहाँ पे देखूँ आपको सही से बता पाऊँ। और आपको असली मैच का मजा लेना है तो जल्दी जाइए और डिस्कॉर्ड सर्वर में हमारे ज्वाइन करिए। तब तक के लिए यहाँ पे थ्रो इन मिलता हुआ, कोस्टा का बहुत क्लीन टैकल वहाँ पे आता हुआ, और यहाँ पे उदांता सिंह जो यहाँ पे बॉल जो है आउट करते हुए। यहाँ पे बेंगलुरु एफसी का थ्रो इन मिलेगा, राहुल भेके, गाइस राहुल भेके यहाँ पे लॉन्ग थ्रो करने वाले हैं, और देखते हैं कि इस लॉन्ग थ्रो का कौन फ़ायदा उठा पाता है, और या फिर यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स के डिफेंस जो है उसको क्लियर करने में क्लियर कर पाएगी। यहाँ पे एरिक पातालू जरूर यहाँ पे टारगेट रहेंगे, एरिक पातालू ने हेड मार सकते हैं, क्लिटन सिल्वा के पास बॉल, गोल क्लिटन सिल्वा गाइस, क्लिटन सिल्वा का यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के तरफ ये गोल आता हुआ, हाफ वॉली यहाँ पे एरिक, लॉन्ग थ्रो वापस से यहाँ पे राहुल भेके का यहाँ पे आपका दिखेगा हमें कि असिस्ट आता हुआ, एक लॉन्ग थ्रो से थ्रो इन था वहाँ पे, लॉन्ग थ्रो किया है, और एरिक पातालू के आई थिंक हेड में लगा था या नहीं लगा था, जी नहीं, मेरे को लगता है एरिक पातालू से मिस हुआ वो हेडर, और बॉल सीधा ड्रॉप खाया। क्लिटन सिल्वा पोजीशन में थे, वहाँ पे हाफ वॉली ली और सीधा गोल पोस्ट के अंदर में स्कोर लाइन चेंज करने का मौका मिल गया। 150 गोल ऑफ दिस सीजन गाइस, क्लिटन सिल्वा के तरफ पैरों से आता हुआ, बेंगलुरु एफसी के जर्सी में आता हुआ, तो बहुत ही मज़ेदार गेम ऑन हो चुका है गाइस। और अगर बेंगलुरु एफसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो जल्दी से हैशटैग बेंगलुरु ओपी, हैशटैग क्लिटन सिल्वा ओपी जरूर कर दीजिएगा। और एक बार मैं स्कोर लाइन जरूर जल्दी से चेंज कर देता हूँ आपके लिए। क्लिटन सिल्वा गाइस बेहिसाब शॉट, मतलब बेमिसाल शॉट मारा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे स्कोर लाइन एक बार हम लोग को जरूर चेंज करना चाहिए, यहाँ पे माफ करिएगा। और यहाँ पे
अब परेशानी शुरू होगी केरला ब्लास्टर्स के लिए, जो कि गोल करवाती है। 5 चांसेस उनको मिले, कन्वर्जन नहीं मिला यहाँ पे। आई थिंक बेंगलुरु के लिए आई थिंक तीसरा चांस था जो कि कन्वर्जन हो गया। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और चिपके रहिएगा अपने स्क्रीन के साथ में या फिर अपने हेडफोन पे मेरे कमेंट्री के साथ में, तो ज़रूर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आगे कैसा मज़ा होने वाला है यहाँ पे। और 24th मिनट में यहाँ पे लिया गया था। देखते हैं कि कब तक यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स जो है वापसी कर पाती है। बहुत बढ़िया यहाँ पे गोल, बहुत बढ़िया यहाँ पे गोल आता हुआ दोस्तों। मैच बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है यहाँ पे। 4 अटैक्स हो चुके हैं अब तक केरला ब्लास्टर्स की तरफ से, मगर अभी तक गोल नहीं आया है। और यहाँ पे बेंगलुरु एफसी यहाँ पे जो है गोल कर दिया है तीसरे चांस में अपने। तो फर्स्ट हाफ में धमाकेदार एक्शन चल रहा है अभी तक। सदर्न डर्बी जो है वो डर्बी की तरह ही हो रही है। और यहाँ पे गाइस पोजीशन यहाँ पे मेंटेन करते हुए बेंगलुरु एफसी की टीम, और थोड़ी सी हेक्टिक होते हुए यहाँ पे गोंजालेस ने अपने ही प्लेयर को शूट कर देता है, राहुल भेके को। यहाँ पे सुनील छेत्री के पास बॉल है, उदांता खिला दिया है यहाँ पे आई थिंक सुरेश वांगजम को। यहाँ पे सुरेश वांगजम रिसीव चेस्ट डाउन करते हुए बॉल को, ऑप्शंस ढूंढते हुए अपने क्रॉस डालने के लिए, हेल्प के लिए उदांता सिंह यहाँ पे आया है। ढूंढ लिया एरिक पारतालू को यहाँ पे। एरिक पारतालू ने यहाँ पे अजीत को ढूंढा, मगर अजीत के पास यहाँ पे इंटरसेप्शन आता हुआ केरला ब्लास्टर्स की तरफ से। बहुत बढ़िया इंटरसेप्शन वहाँ पे, आई थिंक विसेंता गोमज या फिर जुआंदे का वहाँ पे इंटरसेप्शन होगा। और यहाँ पे दोस्तों हमारे डिस्कॉर्ड पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बातचीत होते हुए हमारे दोस्तों के बीच में। 2-1 ब्लास्टर्स, आई थिंक KBFC विल लैक चांसेस विदाउट फकुंदो बट होपिंग इन सहल, दैट्स कोची। केरला 2 बेंगलुरु 1, नाइस। तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में काफ़ी लोग यहाँ पे बातचीत करते हुए, और देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे प्रेडिक्शंस भी अपने करते हुए, तो यहाँ पे देखते हैं कि उनकी प्रेडिक्शंस कितनी हद तक सही होती है। और यहाँ पे तब तक के लिए हम आपको बाकी तो आंखों देखा हाल ज़रूर बताते रहेंगे हम लोग। टॉप स्पीड की चार्ट आई है दोस्तों। उदांता 32 किलोमीटर पर आवर, फिर पारतालू यहाँ पे 31.7 किलोमीटर पर आवर, और छेत्री उसके बाद 30.4 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि बहुत ही स्प्रिंट किया है और काफ़ी तेज़ी है इन खिलाड़ियों में। तो बच के रहना होगा इन खिलाड़ियों से, क्योंकि काउंटर अटैक में कभी भी ये गोल मार सकते हैं। बेंगलुरु एफसी की जो ये ताकत है। सहल अब्दुल तब तक के लिए फ्री किक लेते हुए किसको ढूंढा है? फर्स्ट पोस्ट में गुरप्रीत के लिए इजी कलेक्शन, वहाँ पे रूटीन कलेक्शन। और सेकेंड पोस्ट में यहाँ पे बॉल रखना चाहता सहल अब्दुल समद ने, मगर बॉल यहाँ पे मोरे जो है उनको टारगेट रखा था मैं भी शायद यहाँ पे। लेकिन जितनी हाइट है गुरप्रीत सिंह संधू की, उनको वहाँ पर हाइट वाले बॉल में तो पछाड़ना मुश्किल ही है। तो बहुत इजीली कलेक्शन किया वहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू ने। और यहाँ पे विसेंते गोमेज बॉल पोजीशन रखते हुए अपने लिए राइट फ्लैंक से केरला ब्लास्टर्स की अटैक बनते हुए चांस बन सकता है कॉर्नर के लिए। यहाँ पे फाउल की दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया बीट किया वहाँ पे। संदीप बहुत ऊपर आ चुके थे। संदीप आई थिंक यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है संदीप ने बहुत बढ़िया जगह यहाँ पे फ्री किक जीता है अपनी टीम केरला ब्लास्टर्स के लिए। काफ़ी खतरा बन सकता है यहाँ पे, और एक चांस बन सकता है यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स के लिए स्टार्टिंग 30 मिनट में। और केरला का एक स्टैट्स आ रहा है, स्कोर्ड 50% ऑफ देयर गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, 50% चांस ज़रूर है यहाँ पे गोल होने का अभी। और सहल जो है वो लेने के लिए यहाँ पे फ्री किक गए हुए हैं, और देखते हैं किससे ढूंढते हैं और कौन जो है वो हेड लगा पाता है इस आपके फ्री किक में। यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स के फैन वॉल में काफी जोश नजर आता हुआ, सभी मोटिवेट करते हुए अपनी टीम को यहाँ पे। सहल अब्दुल का यहाँ पे फ्री किक किसी को नहीं ढूंढ पाए, और बॉल रिकवर कर लिया हालांकि पेनल्टी बॉक्स के बाहर में। राहुल केपी थ्रो इन मिलता हुआ तब तक के लिए यहाँ पे
आई थिंक केरला ब्लास्टर्स के लिए जी, केरला ब्लास्टर्स के लिए यहाँ पे थ्रो इन मिलता हुआ एक अच्छा चांस बना था, मगर सहल अब्दुल की जो शॉट था, वो जो फ्री किक थी, वो आई थिंक मोरे पूरा क्लियर खाली थे वहाँ पे। जो अगर वहाँ पे हल्की सी वहाँ पे जो पावर थी कम की रहती वहाँ पे सहल ने, तो शायद मोरे को वहाँ पे क्लियर हेडर मिल सकता था, मगर पावर ज़्यादा पहले से। और तब तक यहाँ पे मैती जो है एक लॉन्ग थ्रो लेंगे। आई थिंक राहुल भेके ने जो कमाल किया है वो कमाल करने की कोशिश केरला ब्लास्टर्स के लिए। लॉन्ग थ्रो आता हुआ राहुल भेके का क्लियरेंस वहाँ पे। यहाँ पे सुरेश वांगजम बॉल को पोजीशन में रखते हुए, और यहाँ पे थ्रो इन भी यहाँ पे अर्जित करते हुए, और ड्रिंक्स ब्रेक भी यहाँ पे मिलता हुआ। तो दोस्तों ड्रिंक्स ब्रेक के बाद यहाँ पे 1-0 का स्कोर लाइन। बेंगलुरु एफसी ज़रूर एक गोल से आगे है, लेकिन केरला ब्लास्टर्स कम नहीं लग रही है, कभी भी मैच में वापस आ सकती है। तो ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपको लाइव मैच का मज़ा लेना है तो जल्दी से जल्दी डिस्कॉर्ड सर्वर हमारे ज्वाइन करिए। लिंक्स जो है सारे अपडेटेड है, डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट में। ज़रूर से ज़रूर आपको डिस्कॉर्ड सर्वर में हमारे आना पड़ेगा। मेरे को भी अब ड्रिंक्स ब्रेक थोड़ी सी लेनी पड़ेगी, देखता हूँ मैं भी थोड़ी सी ड्रिंक्स ले लूँ अपनी, तब तक थोड़ी सी डिस्कॉर्ड में चिट चैट हो जाए यहाँ पे। यहाँ पे वहाँ पे डिफेंसिव थोड़ी सी मिस्टेक हुई, वहाँ पे मार्किंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से जो गोल हुआ कंसीड हुआ, क्योंकि क्लिंटन सिल्वा कंप्लीटली फ्री थे वहाँ पे। आई थिंक बॉल जब आई और पार्तालू ने हेड के लिए गए वहाँ पे, और पार्तालू के ऊपर सबने चार्जिंग किया, लेकिन क्लिंटन को वहाँ पे कंप्लीटली छोड़ दिया। पार्तालू को तो हेड मिली नहीं, ड्रॉप एक सिंगल ड्रॉप में क्लिंटन सिल्वा के पैर में सीधा आई, और हाफ वॉली क्या तो मारा उन्होंने, और सीधा गोल पोस्ट के अंदर घुसाड़ दिया। एल्बिनो गोम्स कुछ भी नहीं कर पाए। तब तक के लिए मैच भी यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, और देखते हैं कि इसके बाद किस तरीके से होता है। यहाँ पे फाउल मिलता हुआ उदांता के ऊपर, यहाँ पे फाउल आता हुआ कोस्टा का। यहाँ पे गंदा फाउल थोड़ा सा कोस्टा का, कोई ज़रूरत नहीं था। अपने ही गोल के तरफ उदांता जो है मूव करके जा रहे थे, मगर यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजनल मिस्टेक हो गया। शॉट आता हुआ क्लिंटन सिल्वा का, बहुत कर्लिंग यहाँ पे शॉट मारा, और एरिक पार्तालू वापस बॉल को अंदर गेम प्ले में लाते हुए, मगर बॉल दूर जा चुका है अभी काफ़ी पेनल्टी बॉक्स से। वापस क्लिंटन सिल्वा के पास बॉल यहाँ पे, और बैक पास करते हुए यहाँ पे अजीत को अपने हाफ में, और बॉल जो है हाफ ग्राउंड में पहुंच चुकी है। यहाँ पे सुरेश वांगजम राहुल भेके को ढूंढ लिया। राहुल भेके यहाँ पे पास करना चाह रहे थे क्लिंटन सिल्वा को, मगर बहुत बढ़िया मैती का वहाँ पे जो है इंटरसेप्शन और थ्रो इन की तरफ बॉल यहाँ पे थ्रो इन किया राहुल भेके ने। सुनील छेत्री को ढूंढना होगा जी, उदांता को ढूंढ लिया। यहाँ पे राहुल भेके का पास बॉल है, बीट किया है सहल अब्दुल को, उदांता के पास बॉल पास दे सकते हैं। यहाँ पे सहल अब्दुल ट्रैक बैक करते हुए, मैती उनके साथ में हेल्प करने के लिए वापस से उदांता को ढूंढ लिया। यहाँ पे वापस से बॉल उसी जगह पे लगातार मेंटेन करते हुए सुनील छेत्री आ चुके हैं। यहाँ पे उदांता को खोज लिया। यहाँ पे पहले यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा पहले यहाँ पे वो टच करना था, हल्का सा एक टकडिंग करना था। यहाँ पे चांस मिस होता हुआ यहाँ पे उदांता का यहाँ पे क्रॉस जो आया, लेकिन पकड़ लिया वहाँ पे गोंजालेस को यहाँ पे डिफेंडर ने केरला ब्लास्टर्स के, जिसके वजह से यहाँ पे चांस जो है मिस होता हुआ। थोड़ा सा पीछे रह गए, संदीप सिंह थे वहाँ पे, थोड़ा सा पीछे रह गए वहाँ पे, जिसके वजह से बाल बचा। यहाँ पे लॉन्ग थ्रो और एक बार आने वाला है दोस्तों बेंगलुरु एफसी के लिए। वहाँ पे आता हुआ सीधा संदीप सिंह का क्लियरेंस, वहाँ पे गैरी हुपर
बॉल मिस होता हुआ यहाँ पे गैरी ऊपर से अपने प्लेयर्स को ढूंढते रह गए और अपने ही पैरों में उलझ गए वहाँ पे बॉल को लेके। तो चांस एक फिर से वेस्ट में जाता हुआ। काउंटर अटैक के लिए राहुल केपी उनके लिए उनके साथ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे एरिक पारतालू यहाँ पे ढूंढ लिया। यहाँ पे आई थिंक अजीत को क्रॉस थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो गया। यहाँ पे छेत्री ने बॉल को प्ले ऑन रखा है। यहाँ पे उतांता को देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ छेत्री से, डिसीजनल मिस्टेक हुआ यहाँ पे। और कॉर्नर हालांकि मिल चुका है। यहाँ पे बीट करना चाह रहे थे वहाँ पे डिफेंडर को और कट इन करके गोल पे आना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे पास दे देते अगर उतांता सिंह को जो कि फ्री खड़े हुए थे यहाँ पे, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। मगर यहाँ पे कॉर्नर ज़रूर जीतने में यहाँ पे कामयाब हुए। और देखते हैं वापस से इस कॉर्नर में किस तरीके से। आई थिंक यहाँ पे कुछ चेंज है दोस्तों। कॉर्नर नहीं दिया गया है यहाँ पे लाइन्समैन के द्वारा बताते हुए कि जो गोल किक है यहाँ पे कॉर्नर जो है कैंसिल करके यहाँ पे गोल किक दिया गया है। और एल्विनो गुम्स की एक लॉन्ग किक आते हुए पारतालू को ढूंढ लिया है। पारतालू का हेडर सीधा क्लिटन सिल्वा को शायद आई थिंक पारतालू का जो पास यहाँ पे बॉल को लिया यहाँ पे थ्रो इन की तरफ चला गया। पारतालू थोड़े से घायल होते हुए वहाँ पे और थ्रो इन की तरफ बॉल जाता हुआ। संदीप सिंह काफ़ी प्रभावित डाला है अपने लास्ट 3-4 गेमों में और बहुत बढ़िया गेम दिखाया है केरला ब्लास्टर्स के लिए। आज भी काफ़ी हद तक स्टार्टिंग ऑफ द 36 मिनट में बहुत बढ़िया वहाँ पे गेम खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया पार्टनरशिप निभा रहे हैं वहाँ पे अपने डिफेंडर्स साथी डिफेंडर्स के साथ। और यहाँ पे कोस्ता के पास बॉल ढूंढ लिया। यहाँ पे सहल अब्दुल समद को यहाँ पे एक हैवी टच और सीधा सुरेश वांगजम के पैरों में बॉल और 1-to-1 पास होता हुआ यहाँ पे, लेकिन बैक पास करने के चक्कर में गैरी हुपर को यहाँ पे बॉल दे दिया सुरेश वांगजम ने और बॉल जो है डिफ्लेक्ट होके सीधा गुरप्रीत सिंह संधू के हाथों में जाता हुआ। यहाँ पे ऊपर के 8 गोल्स कुछ स्टैट्स दिखाया था, मेरे से मिस हो गया थोड़ा सा। और बॉल जो है बेंगलुरु एफसी के पेनल्टी बॉक्स के सामने पास करते हुए और बिल्डअप करते हुए यहाँ पे बेंगलुरु एफसी क्लिटन को ज़रूर ढूंढा था। क्लिटन छेत्री को हिट करना चाह रहे थे मगर बॉल वहाँ पे मिस हुआ। फाउल यहाँ पे राहुल भेके का सहल अब्दुल समद के ऊपर में और यहाँ पे आई थिंक हेड ऑन कोलिजन हुआ शायद। ओके तो चढ़ गए उनके ऊपर और कोहनी लगी। सहल अब्दुल को यहाँ पे चोट लगता हुआ थोड़ा सा यहाँ पे कोहनी से राहुल भेके की और फ्री किक मिलता हुआ यहाँ पे सहल अब्दुल को। देखते हैं ये आई थिंक छठा चांस होगा केरला ब्लास्टर्स के लिए इस हाफ में फ्री किक से आई, जो कि शॉर्ट पास लिया गया यहाँ पे राइट फ्लैंक में। राहुल के पास बॉल बीट करना चाहेंगे अजीत को वहाँ पे, जी नहीं, बहुत बढ़िया डिफेंस, हालांकि शोल्डर पुश में जरूर बीट किया वहाँ पे। संदीप का बहुत डीप यहाँ पे क्रॉस और फ्री किक यहाँ पे मिलता हुआ, खतरा वापस से टलता हुआ। तो केरला ब्लास्टर्स वापस से यहाँ पे जो है बच गई स्कोर करने से और 38 मिनट्स हो चुका है। जल्दी यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स को अपनी जो गोल स्कोरिंग फॉर्म में स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि कन्वर्जन नहीं हो रहा है। बहुत सारे चांसेस क्रिएट हो रहे हैं लेकिन फिर भी टॉप मोस्ट स्ट्राइकर्स हैं यहाँ पे। इनके पास गैरी हुपर है, इनके पास मरे हैं इनके पास, लेकिन कन्वर्जन रेट काफ़ी कम केरला ब्लास्टर्स के लिए। यहाँ पे छेत्री को कोस्ता पकड़ के लेट गए और फाउल की मांग भी कर रहे थे मगर वहाँ पे फाउल नहीं दिया गया। तब तक यहाँ पे जॉन लॉन्ग शॉट क्लिटन के लिए, लेकिन बॉल जो है संदीप सिंह का क्लियरेंस वहाँ पे क्लिटन के पास, हालांकि अभी बॉल आ चुकी है। वापस से यहाँ पे इंटरसेप्शन आता हुआ राहुल केपी का और विसेंते गोमेज के पास अभी फिलहाल बॉल। और यहाँ पे राइट फ्लैंक में वैती के पास बॉल है, कोस्ता को खिलाया यहाँ पे और छेत्री यहाँ पे ट्रैक डाउन करते हुए फुल स्पीड में अपने, मगर यहाँ पे बॉल नहीं मिला उन्हें और यहाँ पे पास कर दिया यहाँ पे मरे को और जुआनन का उतना ही अच्छा यहाँ पे डिफेंस
कूल एंड काम डिफेंस होता हुआ यहाँ पे जोआनन द्वारा। यहाँ पे चांस बनता हुआ बेंगलुरु एफसी के लिए सुरेश वांगजम राइट फ्लैंक में यहाँ पे अपने ऑप्शंस ढूंढते हुए, राहुल भेके को खिलाया यहाँ पे, मिडल अपने जोआनन को खिला दिया डिफेंडर को। बहुत बढ़िया पास सुनील छेत्री के लिए, शॉट यहाँ पे, ओ माफ करिएगा उदांता सिंह के लिए बहुत बढ़िया वहाँ पे जोआनन का असिस्ट आने वाला था। एक तरीके से अगर गोल हो जाता तो असिस्ट होता। लॉन्ग बॉल बहुत बढ़िया, फर्स्ट टच भी बहुत बढ़िया, मगर चिक्सन सिंह उतना ही अच्छा ट्रैक बैक करते हुए उदांता को, और वहाँ पे शॉट लेने से वहाँ पे बाल बाल बचे। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वहाँ पे चिक्सन सिंह का यहाँ पे इंटरसेप्शन आता हुआ, जिसके कारण वन टाइम शॉट मिस हुआ वहाँ पे जो उदांता सिंह का। हालांकि कॉर्नर जरूर अजीत हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अजीत मोराजकर यहाँ पे शायद ले रहे हैं कॉर्नर। देखते हैं इस कॉर्नर में क्या करती है बेंगलुरु एफसी। यहाँ पे बहुत बढ़िया रूटीन सेट पीस यहाँ पे जो है वो अपनी जो यूज करती है। यहाँ पे सुरेश वांगजम के द्वारा यहाँ पे किया गया, नहीं उदांता सिंह के द्वारा यहाँ पे किया गया था एक क्रॉस, लेकिन बॉल थ्रो इन सीधा केरला ब्लास्टर्स के पास यहाँ पे थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पे, और बॉल पोजीशन अभी केरला ब्लास्टर्स के पास। विसेंते गोमेज लेफ्ट फ्लैंक में खिला दिया राहुल केपी को, बिल्कुल खाली यहाँ पे जरूर मिस्टेक हुई है यहाँ पे, लेकिन राहुल केपी का थोड़ा सा खराब वहाँ पे क्रॉस आता हुआ यहाँ पे। मोरे को जरूर ढूंढ लिया है वहाँ पे, मगर देखते हैं कि आगे किस तरीके से अटैक बनता है। सहल अब्दुल को लेफ्ट फ्लैंक में खिला दिया है, सहल यहाँ पे बीट करना चाहेंगे, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया राहुल भेके ने जो क्रॉस था उसको, और जोआनदे खिला दिया मिलन संदीप सिंह को लेफ्ट फ्लैंक में। क्रॉस आता हुआ यहाँ पे, बहुत गुरप्रीत सिंह का बहुत बढ़िया सेव आता हुआ यहाँ पे, बाल बाल बची यहाँ पे बेंगलुरु एफसी की टीम, और एक संदीप सिंह का बहुत बढ़िया ड्रिवन कर्लर वहाँ पे क्रॉस आता हुआ, और आई थिंक यहाँ पे पहले गोंजालेस को लगा, उसके बाद जोआनन को उस पीछे हेड पे लग के बॉल सीधा गुरप्रीत सिंह के हाथों में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम मिला, और उन्होंने कलेक्ट किया। उनके पीछे जस्ट ऊपर खड़े थे, कुछ भी हो सकता था, और यहाँ पे बाल बाल बची जो है बेंगलुरु एफसी की टीम। यहाँ पे बहुत बढ़िया गुरप्रीत सिंह का अभी तक का परफॉर्मेंस, और क्लीन शीट अभी तक तो जरूर हासिल की है उन्होंने, और बिल्कुल गोंजालेस का हेडर जो है पीछे लगा जोआनन के और सीधा गोल पे जा रही थी। अगर वहां पे गुरप्रीत चौकन्ने नहीं होते तो यहाँ पे गोल होने से कोई नहीं रोक सकता था। यहाँ पे बॉल पोजीशन बेंगलुरु के पास, ओवर ड्रिबन यहाँ पे ओवर ड्रिबल कर दिया वहाँ पे बेंगलुरु एफसी के मिडफील्डर ने, और बॉल यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स एफसी ने जीतते हुए। यहाँ पे देखते हैं विसेंते गोमेज किसको ढूंढते हैं यहाँ पे, अपने ही हाफ में यहाँ पे गेम, और 45 मिनट्स कभी भी अप्रोच कर सकता है केरला ब्लास्टर्स को कभी न जल्दी से जल्दी यहाँ पे गोल ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे मोरे बॉल मिला था लॉन्ग बॉल कोस्टा का, मगर यहाँ पे बॉल जो है आउटसाइड होता हुआ, और चांस एक फिर से वेस्ट होता हुआ केरला ब्लास्टर्स के लिए। काफी चांस यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स को मिला है, मगर कन्वर्जन जो रेट है उनका बहुत ही कम, बहुत कम, और यहाँ पे उसी वजह से अभी हम लोग को 0 स्कोर लाइन उनके तरफ से दिख रहा है, केरला ब्लास्टर्स की तरफ से 0 गोल्स। और जो 3 मौके में से 1 मौका मिला बेंगलुरु को, उन्होंने नेट में डाला बॉल को, और यहाँ पे टॉप 5 स्प्रिंट्स देख सकते हैं दोस्तों। सुरेश वांगजम 15 स्प्रिंट्स लगाया है, तो काफ़ी फुल ऑफ वर्क फोर्स नज़र आता हुआ बेंगलुरु एफसी का। पावर हाउस है एक तरीके से सुरेश वांगजम। तब तक के लिए केरला ब्लास्टर्स यहाँ पे सहल अब्दुल के पास बॉल, थोड़ा सा यहाँ पे थ्रू पास जो खिला है वो थोड़ा सा ज़्यादा खिला दिया, टच ओवर ये हो गया, थोड़ा चला गया सीधा गुरप्रीत सिंह संधू के हाथों में, और बॉल जो है यहाँ पे अटैक जो है यहाँ पे बाल बाल टलता हुआ। एक हल्का सा एक टच देना था वहाँ पे, लेकिन बहुत खराब टच वहाँ पे सहल का, माफ करिएगा सहल का यहाँ पे मैच में थोड़ी सी गैमा गैमी हुई, जहाँ पे ध्यान मेरा गया, और फाउल भी यहाँ जीता सुनील छेत्री ने।
क्योंकि कोस्टा को किसी तरीके से पूरा जकड़ लिया था, पीछे से गले लगा लिया था सुनील छेत्री को। और तो सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी को बहुत नज़दीक यहाँ पे फ्री किक मिलती हुई, और देखते हैं कि क्या डायरेक्ट जाएंगे सुनील छेत्री यहाँ से। यहाँ से डायरेक्ट शॉट जाने का ज़रूर चांस है यहाँ पे, लेकिन हम जानते हैं कि बेंगलुरु एफसी किस तरीके से वैरायटी जो है वो यूज़ करती है। केरला ब्लास्टर्स याद करेगा वाल्सकस ने एक फ्री किक शूट किया है, और कुछ दिन पहले एटी के मोहन बगान के एडू गार्सिया ने एक बहुत बढ़िया फ्री किक शूट किया था, सेम पोजीशन से है, डायरेक्ट शॉट। एल्बिनो का बहुत बढ़िया सेव वहां पे दोस्तों, सेकेंड पोस्ट में चांस अभी भी डला नहीं है, क्रॉस आया मगर यहाँ पे अब जाके क्लियरेंस आता हुआ केरला ब्लास्टर्स के लिए, और बाल यहाँ पे बसती हुई केरला जो है सुनील छेत्री का यहाँ पे सेव शॉट करते हुए एल्बिनो गोम्स, और बहुत बढ़िया यहाँ पे सेव बोलूंगा मैं। तब तक यहाँ पे गेम थोड़ा सा रुकता हुआ, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे बाहर हुआ है, बॉल ऑफ साइड हुआ है, और बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा शायद पावर में भी रहता, हाइट में था, और शायद थोड़ा सा हाइट होके डीप होता बॉल तो में भी यहाँ पे गोल देखने को मिल सकता था हमें। लेकिन बहुत बढ़िया यहाँ पे पोजीशनिंग एल्बिनो गोम्स की, और बहुत उतना ही अच्छा शॉट भी था यहाँ पे सुनील छेत्री का, गोल नहीं हुआ लेकिन बहुत बढ़िया चांस। लेकिन उदांता का यहाँ पे क्लियर चांस बनता हुआ, एल्बिनो गोम्स यहाँ पे बॉल को पकड़ सकते थे, मगर यहाँ पे क्लियर करना अच्छा समझा, यहाँ पे ओपन चांस बन चुका था, दोनों डिफेंडर वहाँ पे सुनील छेत्री को कवर करने के लिए चले गए थे, और आई थिंक वो पास जो उदांता सिंह के लिए था थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट रह जाता, तो क्लीटन सिल्वा का वो पास था, और थोड़ा सा वहाँ पे आई थिंक पास स्लो होता तो आई थिंक वहाँ पे उदांता ज़रूर पकड़ लेते, फ्लैश जरूर हैं लेकिन उस बॉल को ज़रूर नहीं पकड़ पाए। राहुल बेके का और एक लॉन्ग थ्रो वाले पोजीशन पे यहाँ पे आते हुए लेना ज़रूर चाहेंगे लॉन्ग थ्रो, वहाँ पे एरिक पातालू को ढूंढा है, कोस्टा का क्लियरेंस, मौर्य वहाँ पे बॉल को रिसीव कर लिया है, ढूंढ लिया अपने साथी प्लेयर हुपर को, कोस्टा को ढूंढ लिया है, सहल अब्दुल को ढूंढ लिया है, छेत्री का वहाँ पे क्या इंटरसेप्शन, और फाउल का इशारा करते हुए वहाँ पे रेफरी जो है वो माफ करेगा, यहाँ पे हाफ टाइम का इशारा करते हुए रेफरी, और सभी केरला ब्लास्टर्स के जो प्लेयर्स है काफ़ी नाखुश कि वहाँ पे फाउल वहाँ पे मांग की जा रही थी केरला ब्लास्टर्स की टीम की तरफ से, फाउल नहीं था, और यहाँ पे बहुत बढ़िया गेम चलता हुआ दोस्तों, 1-0 की स्कोर लाइन है, और यहाँ पे लीड लेके रखा है बेंगलुरु एफसी ने, और हाफ टाइम हो चुका है, यहाँ पे मिलेंगे आपको अगले हाफ पे हम लोग तो चलते हैं और आते हैं वापस से अगले हाफ में।
तो वापस से एक बार गेम चालू हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग को चेंज देखने को मिला है। मोरे जो है यहाँ पे बाहर हो चुके हैं, और मोरे की जगह पे आए हैं हमारे पुटिया जो है इंडियन प्लेयर, एक स्ट्राइकर आए यहाँ पे। क्यों उनको सब्स्टिट्यूट किया गया मोरे को, इतने अच्छे और इनफॉर्म प्लेयर को यहाँ पे क्यों सपोर्ट किया गया? यहाँ पे चांस बनता हुआ राहुल केपी का क्रॉस सीधा गुरप्रीत सिंह संधू के सेफ हाथों में, और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अटैक, स्टार्टिंग से ही एक अटैक बनता हुआ। 1 का वहाँ पे मिस्टेक हुआ था, राहुल केपी ने बहुत बढ़िया बॉल कलेक्ट किया था वहाँ से, वो जो मिस्टेक था, और कैरी ऊपर के लिए जो बॉल था वो कलेक्ट किया वहाँ पे आपके गुरप्रीत सिंह संधू ने। और यहाँ पे चांस जो है बाल बाल बचता हुआ वहाँ पे वापस से एक चांस मिस होता हुआ। यहाँ पे मोरे को क्यों सब्स्टिट्यूट किया गया मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक होपर को सब्स्टिट्यूट करना कुछ ज़्यादा मुझे अचंभित नहीं करता, मगर यहाँ मोरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, जो आपके ऑल टाइम गोल स्कोरर रह रहे हैं केरला ब्लास्टर्स के लिए, उन्हें सब्स्टिट्यूट करके पुतिया को अंदर जो है लाया गया है। और बहुत ही अजीब डिसीजन, देखते हैं कुछ न्यूज़ मिलता है कि नहीं। बेंगलुरु एफसी के पास यहाँ पे बॉल पोजीशन मिलते मिलते बची, और बॉल जो है यहाँ पे बाहर जाता हुआ थ्रो इन की तरफ बॉल, और केरला ब्लास्टर्स की टीम यहाँ पे थ्रो इन लेते हुए, संदीप सिंह यहाँ पे थ्रो इन लेते हुए। विसेंते गोमेज लेफ्ट फ्लैंक में बॉल बढ़ा दिया है, मैथी को सहल कट इन करते हुए अंदर खोज लिया यहाँ पे जोआंदे को, और माफ करिएगा विसेंते गोमेज, नहीं जोआंदे ही है शायद। और यहाँ पे बैक पास सीधा कोस्टा को मिलता हुआ, जिक्सन सिंह, संदीप खोजना चाहा यहाँ पे हुपर को, सीधा पैरों में जाके मिला है, शॉट ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुपर क्रॉस किया है यहाँ पे, लेकिन किसी भी प्लेयर को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिसफुट होते हुए, स्लिप होते हुए वहाँ पे सुरेश वंगजम, मगर बॉल वापस से डिस्पोजेस हुए। सुनील छेत्री के पास है अभी बॉल, सुनील छेत्री को भी डिस्पोजेस कर दिया संदीप ने यहाँ पे, और क्रॉस डाला यहाँ पे पुटिया के पास बॉल, शूट ले लिया वहाँ से पुटिया ने, मगर दिशाहीन शूट या सीधा ब्लॉक होते हुए वहाँ पे बॉल ऑफ साइड का फ्लैग यहाँ पे तब तक उठता हुआ। क्लिटन सिल्वा का थ्रू बॉल था वहाँ पे उदांता के लिए, मगर यहाँ पे फॉर्मेशन दोस्तों बेंगलुरु एफसी की चेंज की गई है, जो कि फर्स्ट हाफ में हमने बात नहीं की थी। फॉर्मेशन जो है क्वाद्रा जो खिला रहे थे वो काफ़ी हद तक चेंज कर दी गई है। यहाँ पे स्ट्राइकर रोल दे दिया गया है, उदांता को स्ट्राइकर रोल दे दिया गया है, और साथ में सेकंड स्ट्राइकर का रोल दिया गया, और सुनील छेत्री साथ में यहाँ पे स्ट्राइकर का रोल निभा रहे हैं मूसा के टीम में। और यहाँ पे आई थिंक जो सुरेश वंगजम है, यहाँ पे सुरेश वंगजम को यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लैंक्स का रोल दिया जा रहा है, और अजीत यहाँ पे बॉल को बहुत बढ़िया रिकवर करते हुए, सुनील छेत्री यहाँ पे पास करते हुए क्लिटन सिल्वा को 1-1-1 पास किया। यहाँ पे बॉल बहुत बढ़िया यहाँ पे लेके जाते हुए उदांता, यहाँ पे फाउल मिलेगा यहाँ पे संदीप का, यहाँ पे फाउल नहीं दिया गया, और यहाँ पे फाउल नहीं दिया गया, काफी नाखुश यहाँ पे, बहुत खराब डिसीजन रेफरी का। और केरला ब्लास्टर्स यहाँ पे काउंटर अटैक बना सकती है। पुटिया के पास बॉल यहाँ पे राहुल केपी को खिला दिया। यहाँ पे राहुल केपी जो है ड्रिबल कर सकते हैं, राइट फ्लैंक से जा सकते हैं, राइट फ्लैंक में गए हैं, हल्का से यहाँ पे क्रॉस किया, लेकिन बॉल सीधा सुरेश वंगजम के पास, एरिक पातालू के पास बॉल। बहुत ही नाखुश होंगे वहाँ पे बेंगलुरु एफसी के प्लेयर, क्योंकि पेनल्टी बॉक्स के काफ़ी सामने वहाँ पे फाउल किया गया था संदीप द्वारा, मगर फाउल जो है नहीं दिया गया वहाँ पे रेफरी द्वारा। और यहाँ पे गेम जो है काफ़ी नाखुश यहाँ पे सुनील छेत्री रेफरी से, प्योर फाउल था वहाँ पे। उससे पहले जो है आई थिंक जोआंदे का फाउल होते होते रह गया था, और बॉल पे बिल्कुल नहीं गए थे यहाँ पे संदीप, और कैसे वहाँ पे फाउल नहीं दिया गया। मरे यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं कि थोड़े से चोटिल नज़र आ रहे हैं और ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूर इस इंजरी के कारण यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट किया गया और पुटिया को अंदर लाया गया। काफ़ी यहाँ पे ख़राब खबर जो है केरला ब्लास्टर्स के लिए, मोरे यहाँ पे चोटिल नज़र आ रहे हैं, और
हालांकि पुटिया जो है उनको उनके जगह पे सब्स्टिट्यूशंस तो अंदर आ चुके हैं, मगर एक गोल स्कोरिंग प्लेयर आपके जो है अगर बैठ जाए तो फिर काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पे खराब पास, सुनील छेत्री के पास बॉल, एरिक पारतालू को दे दिया है। यहाँ पे शॉट लिया पारतालू ने बहुत ही दूर से, लेकिन बॉल जो है ऑफ टारगेट भी गई। वहाँ पे अच्छी शॉट नहीं लगाई वहाँ पे एरिक पारतालू ने। एल्बिनो गोम्स यहाँ पे फ्री किक लेते हुए, सुनील छेत्री खेलना चाह रहे थे यहाँ पे अजीत को शायद, और पोजीशंस काफ़ी स्वैप की जा रही है यहाँ पे खराब डिफेंडिंग यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे जो राइट फ्लैंक के प्लेयर थे यहाँ पे वो जुआनन को यहाँ पे येलो कार्ड दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत ख़राब टैकल यहाँ पे, बहुत ख़राब टैकल यहाँ पे। और कोस्टा यहाँ पे मांग करते हुए कि दूसरी बार यहाँ पे फाउल किया गया है और येलो कार्ड ज़रूर निकाला गया है यहाँ पे वानन की तरफ से, और पुतिया के ऊपर यहाँ पे फाउल दिया गया है और यहाँ पे येलो कार्ड दिखाते भी हुए वानन को, नहीं उससे पहले पारतालू को यहाँ पे येलो कार्ड दिखाते हुए। और बॉल पे गए थे लेकिन फॉलो थ्रू जो था वो काफ़ी डेंजरस था यहाँ पे वानन का, और पुतिया जो है काफ़ी चोटिल हो सकते थे यहाँ पे। जी हाँ, ऑकवर्डली भी यहाँ पे लैंड हुए यहाँ पे पुतिया। यहाँ पे वानन को येलो कार्ड नहीं दिखाया गया, मगर एक पारतालू को येलो कार्ड जरूर दिखा दिया गया है। काफी नजदीक से यहाँ पे फ्री किक, और मोरे यहाँ पे नहीं है केरला ब्लास्टर्स के लिए। और यहाँ पे विसेंते गोमेज, सहल अब्दुल और पुतिया ज़रूर कुछ बात करते हुए कि डायरेक्ट जाया जाए या फिर कुछ वेरिएशन ट्राई किए जाए इस फ्री किक में। और तब तक वॉल सेट करते हुए गुरप्रीत सिंह संधू यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे वानन को ही दिखाया गया है और येलो कार्ड कंफर्मेशन, येलो कार्ड यहाँ पे वानन को दिखाया गया। यहाँ पे डक इन किया, यहाँ पे सीधा वॉल पे शूट कर दिया पुतिया ने, और क्लियरेंस आता हुआ यहाँ पे सुरेश वांगजोम बहुत ही स्पीड में संदीप सिंह को ट्रैक डाउन करते हुए, संदीप सिंह का लॉन्ग पास यहाँ पे फाउल का इशारा करते हुए यहाँ पे पुतिया के ऑपोजिट। तो कार्ड की कंफर्मेशन दिखाते हुए रेफरी, जो कि पारतालू को सिर्फ दिखाया गया था वहां पे। और यहाँ पे जिक्सन का बहुत बढ़िया क्लियरेंस, क्लिटन सिल्वा के पास अभी भी बॉल, गलत खेल। वहाँ पे पास दे सकते थे, मगर अमय को यहाँ पे पास दे सकते थे। यहाँ पे चढ़ गए संदीप सिंह के ऊपर, हाथों के ऊपर आई थिंक। यहाँ पे लॉन्ग थ्रो आता हुआ बेंगलुरु एफसी की तरफ से, और पराग जो है लॉन्ग थ्रो लेंगे इस बार। देखते हैं इस लॉन्ग थ्रो पे क्या होता है, और बॉल यहाँ पे सीधा जिक्सन के हेड से लगता हुआ क्लियर होता हुआ वापस से बेंगलुरु एफसी हालांकि पोजीशन बना के रखी है। और पुतिया के पास यहाँ पे बॉल, पुतिया ने ऊपर को बॉल दिया है यहाँ पे राहुल केपी के पास बॉल यहाँ पे फॉरवर्ड करते हुए, मगर राहुल भेके का बहुत बढ़िया वहाँ पे इंटरसेप्शन। गुरप्रीत सिंह संधू के पास बॉल, लॉन्ग क्लियरेंस आता हुआ यहाँ पे। क्लिटन सिल्वा यहाँ पे दौड़ रहे थे बॉल के लिए, मगर एल्बिनो का बहुत बढ़िया वहाँ पे कलेक्शन, गोल लाइन से बाहर आके एल्बिनो गोम्स ने वहाँ पे बॉल को रिसीव किया। और केरला ब्लास्टर्स के पास इस बार
बॉल पोजीशन वापस से आती हुई। यहाँ पे गैरी हूपर भी थोड़ा सा इंजर्ड फील कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्राइकर जो है केरला ब्लास्टर्स के वो सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं और हूपर के जगह पे यहाँ पे कौन आएगा देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तब तक के लिए विसेंटे गोमेज यहाँ पे बीट किया एक प्लेयर को, अमय को बीट किया वहाँ पे। लेफ्ट फ्लैंक से यहाँ पे अटैक बनाते हुए मैती के पास बॉल, सहल को बॉल दे दिया है। विसेंटे गोमेज के पास यहाँ पे ऑप्शन था मगर क्रॉस नहीं डाल पाए और गुरप्रीत सिंह संधू के हाथों में सीधा बॉल और काफ़ी अच्छा सेव वहाँ पे मिलता हुआ। यहाँ पे game, I tell you. Now that they've lost the talisman Jordan Murray of late. Away by Fran Gonzalez. It's a deft touch again by Chetri. Speeding through. Was it Dunter? And he had Clayton Silva square. Quality defending again from the captain. Great football that. There's the front two, Odanta and Chetri linking up, bringing Suresh into play, and now he's bringing the fourth attacker into play in Clayton. And to be fair to Costa this time, he defends properly. But he's got to put his head on this corner now. Or is it a long throw? Sorry, he's got to put his head on this. Put a marker down to the strikers and just say, you ain't getting any free headers in this box. The Zimbabwe centre-back is not picking up any of the tall players that are in there. He's the free man, and that's why he wins the header. And the block by Sahal, now a problem for Kerala. They've already had an injury issue, and now straight away he's cut open, and it's good to see the concern. Straight away, you saw Wanan rush over to him first. Play will be delayed for the moment. But if it shows it again, I mean, if Costa does this in the first, I just don't understand the mindset. You're a centre half, you're paid to head the ball in both boxes, and if Costa does this in the first half, Bengaluru not 1-0 up. It's as simple as that. It doesn't get any simpler. One day is the player down, his second appearance after coming on. Well, this is the difference between the two teams at the moment. We're now looking at a centre-half who's headed the ball properly at this moment in time, and now in the first half he didn't. And because of that, Clayton, with a bicycle kick, just finishes off wonderfully. Costa there ducking out the way. I just don't understand that. I don't understand that at all, but what a great finish. 10 out of 10 for that finish. A lovely golasso. And 9 out of 10 for the landing here. If it was the Olympic Games, just that little shift at the end as he lands. I like it. I don't know when you've been judging in gymnastics in the Olympic Games before. I haven't done gymnastics. I've done a few sports. Has John Elm done gymnastics? He probably would. Elmy's on the run home like I am actually. Our last few games in season 7 we've had enjoyable experiences again. You will be sadly missed by the Hero ISL and by the group, let me tell you, both of you. Fantastic to work with you. The banter off camera? Never. You'd have to be a high jumper there to or a pole vaulter. It was never going to be on for Para.
they're having their moments, aren't they, Kerala? They're struggling, obviously, with Murray going off at half-time, and now they've got one of their playmakers receiving treatment for a gash in his eye. They're playing at the moment, Rahul KP up top on his own, and Murray's dropping into the midfield berth, so they're down to 10 men at this moment in time, and obviously one behind at the same time. It's not a good night for them at this moment. One day, the 34-year-old Real Betis product, he actually made his debut for the club in the Champions League. 69 appearances, got a couple of goals for them. And he comes here via a stint, a couple of years at Perth Glory, and he knows obviously Hooper, who played against him in the A-League, played against Jordan Murray, but now they're teammates. And Fran Gonzalez waited there. Luckily, that ball kicked a little bit for Gurpreet. Yeah. Back by Parak to May. One day is okay to continue. So it's back to 11 against 11. Again, it shows you the level of commitment from both teams. You know, he's gone back onto the field of play with a bandage around his head. He's obviously going to receive stitches, I would imagine, after the game, but he's willing to get back out there to lend a hand to his team. Now it's his Spanish counterpart, Vicente Gomez. Vital cog in this Kerala Blasters machine. Over 500 passes made by the midfielder. Has a goal and an assist to his name in one day. He seems to be okay. They've patched him up. Andy, it's been a big team selection when you think long and hard about what Musa has done. He's let Deshaun Brown go, and he's left his other big signing in Offset on the bench and playing with a brand new strike force. It's brilliant at the moment for them. And Hooper's frustration. Well, KP, his delivery just slightly off. May goes down. Now Clayton. No foul. It comes off the Brazilian. Good battle between Sandeep and Clayton. Very good battle. Then you've had them all over the park tonight, haven't we? Individuals doing their job properly. You know, for me, I must say the standout tonight is the performance by the Indian players. With all due respect to the foreigners, the Indian players have really shone tonight. I know what you're saying, absolutely spot on. I wouldn't disagree with that at all. Wouldn't surprise you if there's an Indian scores. Well, that's borderline bookable. Just the one card shown tonight, 2-1. Sandeep. Roll KP trying to hook it to this. Oh, the back heel. Yeah, good intelligent defending that. Yeah, look, this man's been here his 4th season with the club, 69th appearance, and has got a few goals, 5 goals. He's got 2 this season against Goa and North East, both 2-2 draws. He should do, Andy, the size of him. Look at him, he's an absolute specimen of a centre-half. Big lad. He's going to get goals from set pieces and open play. Massive goal kick from Gurpreet. A lot of distance. It's gone against Chetri. It's gone against Chetri. And it's a header against Jeekson. He's just led with his elbow a little bit there, but one thing he'll say, Jeekson, you're not going to get a free header this half. Costa, you're not going to get a free header. He's brilliant at that. Sunil's got 2 of his goals from headers, the other 2 from penalties, and those 2 goals actually were delivered by Cabra, not in the squad tonight. When you think of the penalty he missed, Andy, he could have had 5 goals, and that isn't a bad return if you're number 9 scoring goals, because Sunil's been playing out wide most of the game, most of the season. He's found himself down the middle. You expect him to get a goal tonight. Well, Offset, who's been in and out of the starting 11 all season, hasn't got a goal yet. And he's on the sidelines warming up, although they're stretching now, the Bengaluru bench. He's watching the action. That was clumsy challenge on Odanta.
I like to see this where strikers are concerned. I like to see when a centre-half wins the header, your own team wins the header and it comes back into the striker. Get in front of that. Get in front of the centre-half that you're playing against and make sure when you are there, he fouls you. And you get a bit of respite for your team just by getting in front. No one in the box for the Brazilian, the goal scorer in the first half. It's a cheeky backheel. Still in play. That's solid defending. It's gone. Oh well, it's gone against Sandeep. I felt he did everything right. Just that last attempt to take possession, clear the line. Bit of drama there from Sandeep. I thought it was a genuine battle between the two of them. Both having a little fight for it. He's grabbed a hold of him there. That's probably why he's given it. Then they're grabbing a hold of each other then. And he's still got a hold of his shirt. You can't deny that he's got a hold of his shirt. He nearly had his shirt on. Set piece. Keep an eye on Partulu. He's gone near post. He's just taken a drink. It's a cross, Andy, between man marking and zone marking. As you can see, Costa in the hole in the front. He's zone marking, the rest are man marking. Fan wall right there, trying to will their team on. And it's good to see so many youngsters involved in the fan wall in season 7 of the Hero Indian Super League. Give us a wave. Come on, give us a wave. There you go. Who do you support? BFC. That's it. Bengaluru till I die, they're probably saying. Why not support your team? It's part of your life journey. And in comes a dangerous looking free kick. And Albino says, I've just got to play it safe. Probably should have caught it. Sahal comes through and it just dropped for Fran Gonzalez. And well, the referee's blown the whistle for... He looked at his assistant referee. Did the assistant referee lift the flag up earlier? It wasn't there initially. I don't think he lifted the flag up. I think it was a hit. I think he heard him. Offside Chetri. Sorry, it's not Chetri. Yes, it is. Chetri's offside. He's going to drop the ball. Yeah. Credit to the referee. He's made a mistake and he's man enough to say, look, I thought it was offside. This is part of the learning process for Harish Kundu. He's 28 years of age. He's been on the National Referees Panel of India only since 2018. His 40th career game. And his 6th ISL match. And he's telling them, you can see he's telling them, listen, I've made a mistake. Cut me some slack. And that's what players need to start doing. Chetri was offside, and I think it was one hand. One hand wasn't offside, and the ball fell to one hand. And he's obviously said Chetri offside. And he wasn't involved in the play, so it wasn't offside. If that makes sense. It's a compromise of sorts. Kerala had time to set up their defensive line. Would have been interesting if play wasn't pulled up, but now they get a free kick, so it balances out. I think that may have been the easy option from the assistant referee. Well played. Nice and calm. See, as you see, the ball come in. Chetri is offside. And Wanan, who receives the ball, there, the linesman's probably saying to the referee, number 11, offside, number 11, offside. When the ball doesn't go to him, he isn't offside. Well, that was really Partulu's ball to head, but just a slight communication breakdown between young Amay and Big Eric. Header on by Chetri. It's a close line. Albino collecting that ball right at the edge of the area. Well, we're in the 70th minute of the game now. It's gone quickly and it shows you how absorbing it's been here. Bhutia came on for the injured Murray at half-time. It's the only change in the match so far. When you said 70th minute there, Andy, I had to look twice. I didn't think the game was that far on. And it has to be said, Kerala are doing more or less everything they possibly can to try and get the equaliser, truth be known. Kerala Blasters, just 14 goals this season, 8 of them in the second half. That's 6 actually in the last 15 minutes of games. The team in blue
The Yellow Army have struck 6 times in the last 15. They fight it all the way through to the end. I can only imagine what the Blasters fans are thinking right now, looking on, willing their team, hoping, begging for an equaliser. Sahal is through on the right. Well, the left fullback's gone for the long-range goal and conceded a free kick. He was better off playing Sahal. No one was near Sahal on the right flank. When the ball came to him, it looked as if he only had one thing on his mind, and that was to strike the ball from distance. He's obviously got a decent shot on him, but it's just hit straight into the giant called Eric Bartolu in the middle of the park. Silva receives from Suresh, and it's a willing challenge. Gurpreet will play it first time. I'm going to say one thing, Andy. I think Bangalore will need a second goal, because there's a lot of positive play coming from Kerala at this moment in time. I think they need a second goal if they're going to win this game. Hooper just nudging out one on. He's obviously missing his mates, isn't he? You haven't really seen too much interplay between him and Raul KP. Certainly a different player, isn't he? He's the one that'll run in behind. He's got more pace than Jordan Murray, but just that lacking of experience and when to release the ball, when to play, when to link in with Hooper. Sandeep, not a lot of concentration. Great skills to control. With Benta Gomez, and they open the door now. Bhutia looks up for Hooper. Hooper has Sandeep coming. Well, Hooper felt he could get the ball in when maybe he might have been better off playing it to Sandeep, who has the ball for the throw in. Nothing wrong with that though, Andy. He wanted to get across him. Nothing wrong with that. That's dangerous. It's gone beyond Bartolu. Not Fran Gonzalez, who headed it back. Onside! What a blinding save into the midsection of... It still could go in. It finally does. The keeper was down. And it's Super Sub who's done the damage. Real controversy here. Unbelievable. Real controversy. I don't know what the referee's going to do here, but the keeper is down and he's out at the moment. Gurpreet's took one right either in the chest or the head from a strike by Hooper, and they've carried on playing. He's lying in the 6-yard box, prostrate there. He's down, he's out, and they carried on playing and they've got themselves a goal. Look at this, when he comes back in, Hooper finds himself onside, just being kept on. That's a great save. It looks like it's caught him right in the chest. But they've carried on playing, and within seconds the ball's ended up in the back of the net. Just watch Wanan. Wanan actually overruns the ball. Watch the number 5. This is excellent work by the right fullback Sandeep. Wanan overruns the ball, and it's easy. It's easy for the sub. Nalthathanga Bhutia, the 22-year-old. And what I must say here, for this young man, it's his first goal ever in the Hero Indian Super League in his 36th appearance. That's poor defending from Wanan. He's run over the ball, like you said, Andy. What you've got to do when a ball is bouncing around in your 6-yard box, you've got to put your boot on that ball and clear the line. Certainly when your goalkeeper's lying in a heap just outside the 6-yard box. They like the late show. We've said it time and time again. They strike late in matches. 9 goals of their 15 scored in the second half, and 7 in the last 20 minutes. Well, not much Gurpreet could do. You take a blow like that, you've made a massive save. That's what they're arguing here on the bench. If it had been maybe a regain or a transition or whatever, and you had time to see Gurpreet down on the ground,
you can understand kicking the ball out of play, but there was no time for that. The ball went immediately out to the right wing and it was crossed straight into the penalty box. I think that's a great save. Yeah, Mr. Da Cunha, the team manager of Bengaluru, might have been booked there. The assistant coach, not Mr. Da Cunha. But this is a big save. You put your body in a line. Andy, I don't know what Wanan's doing. When you see him run over the ball, clear your lane. There. Unbelievable. It's poor defending, that. Poor defending. If your goalkeeper's on the ground, clear your lanes. It's a mismatch between Bhutia and Wanan. If Wanan goes in there, all guns blazing, Bhutia's not going to challenge. Well, you've got two centre-halves not doing their job in their own penalty box, in their own 6-yard box. Costa in the first half, and it has to be said, Wanan in that incident, when your goalkeeper's on the ground, you've got a chance to put your right boot through the ball, whether you're right-footed or left-footed, doesn't matter. Absorbing contest here, match 65 in Bengaluru. It's locked at 1-1 between the Blasters and the Blues of Bengaluru. My name is Sarah Connor. My son John and I saved 3 billion lives. You may have changed the future, but you didn't change our fate. How do we stop this thing? I'll be back. We had 6 goals when these teams first met this season on December 13th. We've had 2 so far. Well, here's the first goal, Andy. We all know Raul Becky can throw the ball, and he's thrown it 40 metres there. And Partalou's gone up for a head ball. He misses the ball, but the centre-half ducks under it, and Clayton's technique there, not just on the celebration, the volley itself, the bicycle kick was world-class. Important interception by Raul Becky. Sahal was looming. Confidence from Kerala Blasters, the goal making all the difference for them. Bengaluru trying to respond. Chetri's ball to Clayton. Down goes the Brazilian. Shoulder to shoulder, or a little bit more. It's interesting. It's a great ball by Chetri inside the fullback, and this is one where you're thinking, I've got to stay on my feet, I've got to make the right decision here. And it's a barge more than the shoulder. That's more than a shoulder. That's in my mind. Barged out the way he was. That's a penalty. It's a call and a half, but I'm looking at that thinking he's gone shoulder to shoulder, and that's the only thing you can protect him for, but he's actually barged him off the ball there. A little bit of controversy, a little bit of spice. 2 goals of totally different contrast. I feel the one man I feel for tonight is Gurpreet. The keeper's down. It was really a moment where the referee probably should have blown the whistle. The goalkeeper's down. Maybe. It's up to the referee, not the players. Yes. Because Kerala continue playing. They're not looking at where the goalkeeper is. They know that he's made a save. I'm with you on that one, Andy. Yes. I think that I really believe the referee was his moment to say, blow the whistle, I'll drop the ball wherever it is right now when play resumes. Gurpreet wasn't getting up, and now he could be called into action again. He is, it's easy. Well, KP is through on goal. That was the time for this man to make it. Decent movement, and he's stayed on side. Great first touch with his chest, and the ball's just bobbled up. He's probably ran one down his shin. Not a great technique there, but he's just ran it down his shin and made it easy for Gurpreet, right into his midriff again. Little substitution here. I think Suresh is coming up. Here's Suresh's touch map. You can see he's been playing right-hand side of midfield. You'd be disappointed coming off, to tell you the truth, but with 10 minutes to go, he's putting, I think it's the first sub, isn't it, Andy? Oh, sorry, they made a half-time sub, didn't they? Half-time. There's no way through for a May. And a foul is the ruling.
Suresh is cutting a forlorn figure just behind the goal there, but he shouldn't be. He should be pleased and proud with what he's doing. 45 touches, I think he had. And for me, that's a good contribution from a guy that's playing a different position. Offside flag is up. Banan. Under 10 minutes remains here in Bengaluru. It's bouncing perfectly, or did he take it out? No. I think if I'd have been interested there, instead of it being Odanta, that'd have been Sunil Chetty. He would have gone for it. Absolutely. Why did he pull out? I don't know. There's two different creatures there, and I'm talking about one with absolute blistering pace, and the other one, he would have just gone through the goalkeeper. I'm not worried about, the challenge, but he would have gone in for the challenge. Look at this here, the brakes just go on, and I'm thinking, go on, leave something on, not on the goalkeeper. You're not trying to foul him, just leave something on. He catches it low as well. He's not catching it high. Correct. 1-1. Whittier with the equaliser. Gurpreet had made the save. He was down. Costa. That pass from Vicente Gomez was intended for Sahal. Jason too strong on Chetri. The left fullback, Dhanachandra. Not on the sheet the last two games. Unused 6 times, just one start in a 0-0 draw against Chennaiyin. And Partalu is the man, along with Vicente Gomez, covering a lot of ground tonight. You can tell, just look at the shirt. It's been fully committed, Andy, there's no doubt about it. You expect them to be fully committed. You're playing for 3 points here, and both sides have not given an inch. They've both gone after each other. A little bit of quality in the final third. We've seen 2 goals. I'm still saying there's another goal hovering around. I can't tell you which one too. Here's the first one, which is a wonderful technique from Clayton, which you'd expect. He's a goal scorer. He's playing out wide, he's playing down the middle, he's playing all over the place. As long as it's on the front line, he gets a half a sniff for a goal, he'll score. But the second one was a little bit of controversy, where the goalkeeper takes one in the midriff, and then it's a... He's got to, look, I know he's taken it in the midriff. He's got to get up. Yeah, I know. The ball's not dead. He's got to get up. Some referees will blow the whistle, concerned about the goalkeeper not knowing what the injury or the extent of the injury is, but I know what you're saying. I'm with you on that. I wouldn't have gone down. Certainly, if that had been a physical punch or a knockout or whatever, but it's the ball hitting him. And look at the size of him. He's a giant of a lad. Look, we've seen play drawn up for serious injuries, head injuries. You've got to stop the game because you don't know the extent. But now we see a change. Satya Singh is coming in to Sahal. And Satya Sen hasn't been on the team sheet the last 3 games. He's come off the bench 6 times, had 2 starts. How did you see Sahal's performance tonight? Not as impressed as what I was in the previous game against SC East Bengal. He's worked hard enough. He's had better opportunities to create in this game, and it hasn't. He's hit the post, shall we say. He becomes confident. Big shout, took it clean. And now Fran Gonzalez is down. He's got a muscular problem. So he was brought into the starting 11 tonight after 7 sub-appearances and 2 starts.
missed the last 2 games. So they're going down the count at the moment. Another player for Bengaluru. He's gone up hoping that Albino's going to miss it there, and he's landed 1 foot, and it looks like a little bit of cramp, possibly. A little bit of cramp. But isn't that good to see, you know? Costa straight across to him, stretching it off for him. He's got the medics on it now. And it looks like Upset's going to make an entry. So they're going to go for the last 5 minutes, they're going to go for bust by the looks of it. We're going to see a double change here now for Bengaluru FC. Upset is coming in for Danta. And we're also seeing Pratik, who missed out tonight as well, coming in for Fran. Is this the moment we're going to see a goal from Upset? Because we've been waiting for it all season so far, haven't we? He's playing alongside a strike partner that's really mobile and it's really up for the game, and he's still on the field of play 86 minutes into it. Yeah, Upset's just got the 1 assist, 17 shots. So for Fran Gonzalez, his night ends. If you just watch this, it's a wonderful take by Albino. Highest point, he just catches Albino with his right foot, and it alters his landing strategy, and all of a sudden it looks like it's cramped up as he's landed. But they've made the substitutes now, so he's out again. Yeah, a lot of bother there. The Spanish defender Fran Gonzalez, mingled with Indian fans. He had a wonderful campaign with Mamba Garnets. Bit of a miscue there from Partalu, but they clear it. And now Vicente Gomez, Hooper's making a run in behind one on. And the substitute commits the foul. That's a ridiculous foul. It's crazy. Pratik, all he's got to do is usher him away from the goal. Look at that. He's nowhere near the ball. And he knows Raul KP's got pace. You've got to go across there and just usher him out of play. There's no impact area on the ball. He's miles away from it. I just don't understand what he's done. And now he finds himself man-marking Costa. This could be interesting. You can hear the noise, Andy, the amount of noise that's coming from the group. I'm just letting it go. I think it's interesting just to hear the players. Whipped in delicately. Gurpreet gets enough on it. Roll KP. It's wasted. It's wasted. Gurpreet goes deep. And now a clumsy challenge committed at the other end. Less than 30 seconds Both of them subs. After defending a free kick, less than 10 seconds after it, they find themselves having to defend a free kick themselves. Like you say, both subs. Is it too far out? It's not for me. I think this is well inside the distance. Upset. Too far out for Chetri, but not for this man. Well, wouldn't this be nice to see him score his first goal? Not if you're a Blasters fan, of course, but certainly if you're a BFC fan. Christian Upset, the Norwegian. 7 starts, 5 times on the bench, including tonight, of course. 17 shots, no return, 1 assist. Upset, he curls it around, and the keeper has it well and truly covered. As they used to say in the old days, you throw your cap on that one. No real bend, no real venom, no real direction, and it's an easy take for Albino. Bartolou. Clayton. Clever decoy. And the referee plays on. Tomorrow night, ATK Malmagan. They've got a great game in store there. They're hosting Chennaiyin at the Fatorda. Match 66. 2nd v 6th.
Is there a twist in the tail, Andy? You feel as if there is, don't you? You feel that something's coming. Yeah, trying to work out what end. It could be this end. The goal scorer just evades him. 5 minutes is a signal. 5 minutes to be added on. Gurpreet keeps it in. That's wonderful distribution by Gurpreet. Opseth. Incisive run. He's going all the way, but his final delivery is not strong enough. He whips it over. So unlucky. That's Another sub. An unbelievable distribution from Gurpreet. Look at that. On the money, straight into Opseth. He holds the ball up like we expect him to. Plays a lovely little pass inside. And he skips past two and just fails to get the finish in. Albino pulls the save off. Leon Augustin has 1 assist but no goals to his name. 5 sub-appearances before tonight, and it was there for Leon. It was one of the best runs of the game. Still time. ATK Mohammedan against Chennaiyin, 2v6 tomorrow night, match 66. Gurpreet has to come out quickly. That was a fantastic run from the substitute. You've seen a couple of the subs stand out tonight. Putia, the equaliser, a couple of fouls by players just on the pitch, inviting positions for the set piece. And then Leon Augustin with that wonderful run. What do you want from any sub, Andy? Is make an impact, and the majority of them have done for sure. But the one that's making the impact in a negative way is Pratik. He needs to just calm himself down and get something from the game. Don't lose the match by making silly fouls, you know. Opseth, to his credit, chased down that ball and it forced Chandra to clear it. And we know the long threat with this throw-in. Bartolu, Wanana in there, and so is Costa. Out jumps them all, and now he goes down. Bengaluru playing on. Bartolu. Costa's getting up. He's got cramp. Santi clears. That would have been the definition of irony there if they had got a goal, wouldn't it? With big Costa down. But an outfield player going down, everybody screaming for the ball to go out. The most important player on the pitch when it comes to goalkeeping is the goalkeeper. And he's down in the equalising goal. It's the way the game is, isn't it? Ralbeke. He waits. It's long, it's threatening, it's headed on by Bartolu. It's the overhead again! It's against the post! Bartolu's shot's blocked! It was Wanan actually with the second one. And now, Roll KP's got Sandeep square. Roll KP, will he take him on himself? He does! And he scores! A golazo from Roll KP! Bengaluru could have stolen it at the other end! But this player has gone down the other. The 20-year-old has struck deep in a stoppage time. Another night of high drama here in Bengaluru. Andy, that is absolutely phenomenal sequence of play. It should be 2-1 to Bangalore, and within 10-15 seconds of them hitting the post and then a save, the ball ends up at Raul KP's feet. He's got a 2-on-1 situation. The defender is okay to start off with, and then he beats Gurpreet at the near post. What a finish. I think we've seen one at Fatoda, and it's exactly the same kind of finish. He's beat the keeper at the near post. Well played, Kerala Blasters. Truly incredible. Roll KP's second goal of the campaign. And this is much, much more important. He scored in the 4-2 loss against Bengaluru.
on December the 13th. He has come up trumps. They're unbeaten in 2 games at Kerala Blasters. And are they taking 7 points from their last 3 matches as Kone is coming in now. Kone, the Burkina Faso international, replacing the Zimbabwean international, Costa, the captain. He was down with cramp. He gets up. Bengaluru can't believe it. This could be their 5th loss in their last 6. The game was there, you thought. The acrobatics. Partalu heads in. They just clear the line. The clock is ticking. There's still time. They're looking at the watch in front of me. The bench of Kerala saying it's full time, but there have been some stoppages in stoppage time. This is absolutely phenomenal. I wouldn't put it past him to score here, by the way. Well, KP goes near post and the keeper comes and takes it. And that is full time in a night of absolute drama in the Hero Indian Super League. Incredible second half. It lightened up in the 73rd minute with an equaliser from Putia. And then deep into stoppage time, Rahul KP beats Gurpreet at the near post. Kerala taste success for just the 3rd time. Andy, what a game. What a finish to a game. And I tell you what, this makes the season for Kerala Blasters. They've had a poor start to the season by their own admission. There's players getting booked after the final whistle's gone, and they're all Bangalore players because of the way, the spirit Kerala Blasters showed in that last 10-15 minutes. You're 1-0 down and you win the game 2-1. That's got to be down to spirit and character. Absolute 100%. What a remarkable game. And for Kerala Blasters, just the 2nd time they've beaten the one-time champions Bengaluru FC in their 8th attempt. Gurpreet can't believe the end of it. But Kerala continue on, beating Bengaluru 2-1. Absolutely so much to play for Bengaluru FC on 13 points. A victory would have got them to within 1 point of 4th place Hyderabad. But it was Kerala who had their moments in the first half. Costa misses the target in the 14th minute. Sahar was causing damage down the left flank in the first half. He comes into the box, just can't get enough on it, and he did have support inside. At the other end, this is what happened. Clayton Silva scores the 150th goal of season number 7 of the Hero Indian Super League in a perfect way. Chetri squeezes it on. Dunta's ball takes a touch. A lot of action, a double, well, it bounces off one, bounces off his teammate, and luckily Gurpreet was in the right position, as was the keeper at the other end on this free kick. Chetri in stoppage time. In the second half, there was renewed vigour. The ball comes in, Gurpreet takes it clean. Here, the ball is headed away, it's played forward. Hooper's onside, strikes the body of Gurpreet. He's down, play continues as it should. Wanan doesn't clear there, but Putia says, thank you very much. I've just scored my first ever goal in the Hero Indian Super League. 1-1, they're back in the battle. This mazy run from Leon Augustin, he can't finish off what was a perfect lead up. And that could have been the game for Bengaluru FC. And even in stoppage time here, you're thinking the set piece threat, the acrobatics, and it doesn't come to fruition. That's blocked. And keep an eye on this. The header away, Hooper controls, plays the ball perfectly. It's a one-on-one situation which becomes 2-on-1. Rolketby looks inside and says, I'll have a go here. Gurpreet beaten at the near post. That is the winner. He is the hero. Kerala prevailed 2-1.
Well, if you're a neutral, you're loving it. If you're a Kerala fan, you are absolutely elated. Your team now is 3 games unbeaten. Dare to dream, perhaps. You're 4 points outside the top 4, but there are other teams on 13 points, including Bengaluru, Jamshedpur. 2 points behind Chennai and Northeast. Frustration for Coach Musa and Partalu. They can't believe what unfolded here, and you don't blame them. 2-1. It was 1-0 at the break in favour of the Blues. And then the Yellow Army rose. They rose in unison to deliver the best possible outcome. 2-1. 23 attempts, 6 on target for Bengaluru. Possession square, accuracy very similar. What a night. We're all just trying to take it all in, trying to understand what unfolded here. Magic night. And for Kerala, they climb above SC East Bengal. Look how tight it is behind Hyderabad. Northeast United, Chennai, Bengaluru, Jamshedpur, SC East Bengal split by just 3 points. The run home will be interesting. ATK Mohun Bagan, they would be expected to do the job against Chennaiyin, but who's to say? I hope you enjoyed our coverage from Match 65. We bid you farewell from Goa. They're actually running an international drug racket. वो आपके तीनों बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। Hotstar Specials presents Arya. We are an unusual couple. What exactly is your story? And then the happy ever after. The Phoenix sits on the right hand of the Emperor. She's both beautiful and strong. She is his guardian, his protector. My name is Sarah Connor. My son John and I saved 3 billion lives. You may have changed the future, but you didn't change our fate. How do we stop this thing? I'll be back. हमारे एजेंसी में हम कहानी और मिसाल दोनों बादशाह बनाते हैं। They were a goal down in the first half, but we saw a tenacious Blaster side come out in the second half with Super Sub Puttiya getting them an equalizer in the 73rd minute. His first goal in the Hero ISL. Then struck Rahul KP scoring the winning goal of the game for the Blasters. 2 goals in the second half, beating BFC for only the second time ever. Full time at the Bambolim. Kerala Blasters FC 2, Bengaluru FC 1. What an intriguing second half, Brad. What did you make of it? Yeah, it was absolutely brilliant. We expected this. We said the game wasn't over in the first half. We knew there were going to be goals. And I think Phil mentioned it in comms about if Bengaluru didn't score a second goal, it wouldn't be enough because they just weren't going to be able to. The defence isn't confident enough to hold on to it. And I think as soon as a goal went in, it's almost as if Kerala Blasters hadn't believed that we can actually win this game. But it could have gone to right at the end. Either team could have won it. Bengaluru hit the post, I think the base of the post. It could have gone either way, but what a way to win it. Absolutely fantastic counter-attacking goal from Rahul KP, and he's done that twice now against the same opponents. Well, I'm talking about the fine margins. I mean, they've hit the post, and probably, I didn't get the count, but it was probably about 15 seconds
15 seconds later, they've got a winning goal at Kerala. It's tremendous spirit. It's a great advert for the Hero ISL. Fantastic advert for the game. Phil, what an amazing comeback by the Kerala Blasters. Of course, Super Sub Puttiya getting the first goal in the 73rd minute. Well, I don't know what Wanan's doing at this moment. Obviously, Gurpreet goes down. What would I have done here? I would have crossed the ball, no doubt about it. I haven't got time to look up to see the goalkeeper's down. But then Wanan jumps over the ball instead of just clearing it away with his right foot there. Just scoop it away, get it away from the goal. It becomes crazy kind of defending. And then all of a sudden, this happens at the other end. Great overhead kick. And literally 10-15 seconds, they're now 2-on-1 at the back. And it's an unbelievable breakaway. And from this moment, if you look at that, that's a quality ball. Rahul KP, he's got a decision to make. The defender does very well to start off with. He denies the ball to Sandeep, but then he beats Gurpreet at the near post with a wonderful strike. That shows a lot of character, and that shows a lot of bottle where the kid's concerned. Brad, what did you make of Rahul KP's goal? So much action there, and then finally he gets his goal in. He certainly likes to score against Bengaluru FC. Well, he certainly doesn't. It could have been any one of the two Kerala boys winning it for them. There's Leon Augustine on one end, where he had that glorious chance, and then he was the one defending against Rahul KP. But we spoke about this. It's great to see the young kids now grabbing it, because Jordan Murray gets injured and comes off, and you're thinking, all right, do they have their chances now? And the coach said, all right, Rahul KP's got pace to burn. Let's put him up alongside, because it's like for like in a way in terms of he's got pace like Murray. Let's play him alongside. And Puitaya came on position. So when you make those subs and the young players grab their opportunity, and we're seeing more and more of that this season, where the young players, when they're given their opportunity, they're standing up and saying, we can do this. And that's great to see. But there's something dangerous about a 1-0 scoreline, and that's exactly what happened. Bangalore needed that second goal, and they were losing a little bit of momentum, a little bit of impetus going forward, and all of a sudden it became one-way traffic in the latter stages. And you get a 1-1, there's only one team going to go on to win it. Unfortunately, it was Kerala Blasters for Bangalore. The Kerala Blasters camp will certainly be a very happy one, with the young guns firing up for them. So much more to talk about. We'll now head pitch side for the presentation with Sonal. Good evening, everyone. Welcome to the post-match presentation of the match between Kerala Blasters FC and Bengaluru FC. Before I get to the awards, a big thank you to all of our sponsors for their contribution to Indian football. First up is the club award. I would like to request the captain of the winning team, Costa, to pose with a cheque of Rs 50,000, sponsored by Byju's. Well, the coach made some important changes today to the lineup of Kerala Blasters, and every one of them worked. Sandeep at right back, crossing the ball in for Puitaya, who came on as a sub. And what a wonderful strike once again from Rahul KP to ensure all 3 points head back to the Kerala team tonight. Next up is the DHL Winning Pass of the Match Award, and today's winner is Gary Hooper. He will receive Rs 25,000 courtesy DHL Express. Well, Big Hooper was signed to score goals, but as long as he provides inch-perfect assists like this, a beautifully weighted pass for Rahul KP to run on to take on the defender and smack it home past Gurpreet Singh Sandhu. And that's why it's our DHL winning pass of the match. The final award of the night is the Hero of the Match. It goes to the standout player on the pitch, and today's Hero of the Match is Rahul KP. He will receive Rs 50,000 for his efforts from Hero Motorcorp. Well, there's something about this Bengaluru side that brings out the best in Rahul KP. He can strike a mean ball, and he's done it twice against them, but more importantly tonight, picked up all 3 points for his side. He's our hero of the match. That was an exciting second half, Rahul. First of all, congratulations, and what a comeback from Kerala Blasters FC. You must be delighted with the result. Thank you so much. Yeah, How did you feel after you scored that goal?
It's been really hard for me if I look at the last match because I made a mistake and that caused me a lot of sadness. But coming back like we gained that 3 points by that strike. So I'm so happy because, this is what it is because I was really down a few days back, but it is how it is. I have to push and, show myself what I am. And I've been really trying so hard to, show this moment and glory to God because God is something that kept me going and He's amazing. Oh, that's amazing. You've beaten your bitter rivals BFC. What does it mean for the team and for the fans? For the fans, it's always good to, they consider this as a derby. So for me, it's amazing to win against BFC. But for us, it's more than a team. It's the points that cost us, So this point was really important for us. So we are happy to just get this 3 points, and we're gonna keep looking forward from the next match. Thank you for talking to us. Thank you so much. Congratulations. Thank you. That brings us to the end of the presentation. Thank you. Thanks for that, Sonal. Well, he worked hard and it showed tonight. He scored the winning goal, a deserved hero of the match, as he nicked it right in added time. What an amazing goal for him. He certainly likes to score against Bengaluru FC. Let's take a look at his goal again. Brad, do you want to walk us through that goal? Well, I'll walk you through it while he sprints onto it. But this is a fantastic sequence play. It's a long throw and you know what you're going to expect from Bengaluru. But if you just look at this, as the ball's dropped, now I think Eric's gone as the ball's bounced out there and he's probably gone towards it. Had he dropped off, maybe he would have gone towards Hooper, but taking nothing away. Hooper's taken a touch, looked up, and that's exactly what you want. You want that Rahul KP peeling off into that space, because that's where he can take players on. The defender, he's done the right thing. He slowed him down. I actually initially thought Rahul should have maybe passed it earlier, because a teammate is in a better position. But when you can do that at the end of a strike, and then we spoke to Elko, obviously Elko's worked with him, and Elko mentioned that whenever in training, when they were doing shooting drills, Rahul KP almost always 9 times out of 10 hits the target, and that's what you want. We've seen kids blazing it over, and he's done exactly the same in the last match against Fatori. He hits it hard and hits it low. And against a goalkeeper, someone like Gurpreet, if you hit it low, he finds it very, very difficult to save it. Gurpreet's been beaten many, many a time from that distance. I'm not going to be too critical because he's only about 12 yards away from that strike, and the power's beaten him. It's not that he's put it in any other corner, it's just sheer power and going low, and that's a great finish. Definitely a great finish, and someone who'll be very happy with that finish is his coach, Coach Kibu Vicuña. Coach, congratulations on the win tonight. What did you make of your team's performance, especially in that second half? Thank you very much. Yes, very happy because today it was the opposite than the last game that we lost 2 points in the last minute. Today we won 2 points in the extra time. So we are very happy, and especially we are very happy with the performance on the team that we never gave up and we did our best tonight. Kibu, just a question. I'm delighted for you to tell you the truth, but to win a game in that style, in that fashion, at the end is fantastic, especially when everybody's talking about how many points you've dropped when you've been in winning form. But you were behind, the spirit was there for everybody to see. But just a question, if Murray hadn't have come off at half-time, would KP have been on the pitch? Yes. I mean, we have the possibility. Jordan Murray is playing very well as number 9, but we wanted Rahul in the second half as number 9 behind Gary Hooper, because he's quick, he's fast, he has the possibility to run behind. The defensive line is tracking back, more spaces to Gary, to Vicente, to Juan to play. So yes, we are training is an option that we are always looking for. No, Rahul as a striker also, not only as winger. All right, Kibu, you sprung a couple of surprises on us today. Juan there, who we were probably expecting to see playing in the back, you're playing in midfield, and Jackson, you moved him from the midfield to the back. What do you make of those two changes? I thought both of them were brilliant today. What did you make of that? Yes, look, we are also thinking. We were also thinking in the opponent team. In the opponent team, they are very strong in crosses. We were expecting that Offset was playing as number 9. That's why the physicality of Jackson was important. Also Sandeep against Chetri, because we had the problem with Chetri in the first game. These crosses to the far post with Chetri looking the challenge against the right back of the opponent. That's why
Sandeep played tonight as right back also. So was tactical decision. I'm very happy because Jackson showed tonight that he can play in both positions very well, and also the hierarchy of Juan, you know, is a player with leadership that is helping us as we expected. Thank you so much for talking to us, Kibu. Congratulations once again. Thank you very much. Thank you. Good night. Let's take a look at the equalizer. We are talking about Rahul KP's goal, but the Kerala Blasters got an equalizer in the form of super sub Puttiya. They waited till the 73rd minute prior to get that equalizer. Yeah, and all credit to them. And I'll tell you who also should get credit over here is the referee. Because you have people who are saying, oh, he maybe should have stopped play. It's clearly onside over there. There's a misunderstanding between the defenders. It struck him in the chest. He's gone down. I think the keeper can get up over there. He's got to be stronger and braver and get up. Everyone else is switched off. If you look at players like Eric Partlou stopped, Juanan's switched off in terms of he should have just put his foot through it, as Phil was saying. But there's players who stop. You can't stop just because your goalkeeper's down. You have to play to the whistle. It's an advantageous position for Kerala Blasters. It's a very good decision by the referee to say, I'm not going to stop. I'll stop it if the ball had gone backwards. You can stop it because it's an injury to a goalkeeper. But he's played on, and all credit to Kerala Blasters because they would have been massively disappointed if that was disallowed because the keeper's on the ground. And I think credit to the referee where credit's due. We have Sunil Chhetri pitchside waiting to talk to us. Hi Sunil, commiserations on that result. You were watching that goal. What did you make of that goal? Actually, I don't know what to say. Probably we should have defended better. That's all. Sunil, actually before they scored the winning goal, I had you down for hero of the match. I know that's no consolation. It must be awful the way you're feeling at this moment in time, but how do you describe them last few minutes? I mean, this is football, yeah? It's football in India, it's football in any part of the world, but coming into the latter stages of that game, I thought you were good for a point, if not three. Oh yeah, we tried our best. We tried to be compact. We tried to keep the shape. We got the goal, which was important. Last couple of games we had to chase the game. But yeah, when I just saw the first goal, probably could have defended well. The last one, again, small mistakes. It feels awful because last few years we haven't been in this kind of situation, but no one to blame. Just going to go back to the drawing board, come back again and try it again. But it really feels bad. We tried, we gave our best. Right, Sunil, I mean, I know we've spoken about this recently about you playing centrally and maybe playing two up front. And we were delighted to see at the start of the game, not just you playing centrally, but also to see Udanta where, you know, he hasn't played there for a long, long time. And you guys look brilliant in that position. Do you think that's the best way forward now for Bengaluru in the remaining games? I don't know, Praj. It depends on the coach, but I mean, that's one position that I've played all my life. It was good to see Udanta in the ball. It gives, I mean, there is a little bit of combination there. The best part about the thing was we had to take one of the number 6. That's why probably we were compact. That was a message from the coaching staff that no matter what, no matter where, we take one of the number 6 and make it difficult for them. It was hard work, but I think Udanta did a really good job. Probably I helped him also. We were all right till 70th, 80th minute, but you got to do that all 90 minutes to get a result. It's not easy, especially when you're down. Even though you're defending with 10 men, things happen, and you just got to go back and raise your hand and take responsibility and come back stronger. Sunil, I don't know you as well as Prad, but I'm looking at a guy that's got a lot to offer the Indian game going forward. These kind of moments put you off coaching, put you off management, or do you think you'll eventually go into the coaching or the management side? I don't know, to be honest. I haven't thought about it. I don't have the kind of patience or the skill as I'm talking right now, because I know coaching is really, really hard. I'm finding it difficult to be a player right now, to be honest, so I'm going to work hard on that. But when the time comes, to be honest, I'm not sure Prad knows it. I'm probably not cut for it. But as far as now is concerned, I'm just going to go back and work hard for me to be a better player. Thanks for chatting with us, Sunil. Commiserations on that loss once again, and good luck for your upcoming fixtures. Thank you. Captain Sunil Chhetri, they're visibly disappointed. I mean, of course, they lost points from a whizzing position, and especially after a goal like that, Prad. What an exciting goal by Clayton in that first half. It was a great goal in terms of it's something they've obviously worked a lot on this season, but sadly for them, it was this throw-in where they got the goal. It's the throw-in right at the end of the game where they almost got the winning goal. But in between those, in open play, it was just one counter-attacking moment with Leon.
chances are few and far between. How many times did Udanta get in behind? I mean, we know he got in behind once and he tried that difficult volley. How many times did Sunil get himself in goal-scoring positions? So I think we touched upon it in the pre-show. Obviously, when you lose a player like Dimas, you lose creativity. And they have to, if you can't like-for-like replace, obviously when Chisco comes in, they have that replacement. But until Chisco comes in, I think they have to tweak the formation a little bit to try and get more attacking output out of it, but also at the same point, keep themselves a little bit more compact at the back. But the other part of it for me, Brad, you know, when you come into football, and it's not archaic this by any stretch of the imagination, but if you're wearing a number 5 on your back, if you're a centre-half, your job's to head the ball. Your job's to stop the striker from creating, scoring goals, etc., etc. And I thought, at times, Chetri was bullying Costa, and it should never be that. It should be the other way around. And for to put his head on the ball like he did in the second half, that's the reason why Kerala's won the game. Not the 2 goals they scored, they've defended properly, and that's a big difference. So much more to discuss on Football United Live, but it's time for a short breather. We'll see you on the other side. We are an unusual couple. What exactly is your story? And then lived happily ever after. The phoenix sits on the right hand of the emperor. She is his protector, both beautiful and strong. We are under attack. Every family must contribute 1 man to fight. It is my duty to protect my family. What is your name, soldier? Hua Jun, Commander, son of Hua Zhou. When they find out who you are, they will show you no mercy. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. You ready? I was born ready. Hit it. Five years ago, I thought I lost you forever. Will you marry me? Yes. You have done an admirable job going against your own nature to raise this child. But now, she will finally get the love of a real mother. There will be no wedding. What have you done? Hello and welcome back to Football United Live. Let's take a look at the Hero Indian Super League points table, the league table, and how today's win for Kerala Blasters has changed that. Brad, how important was this win for the Kerala Blasters today? How crucial was it for them to get the 3 points? I think the 3 points is absolutely massive when you're at that point of the table, because all of a sudden you look at it where they were, you're looking at, you don't want to be finishing there and thereabouts between the sort of bottom 2 teams. But all of a sudden 3 points, you're up there, 1 more win and you're automatically just 1 point behind Hyderabad. That's how quickly you can move up in the table at the moment, because we've had a lot of draws of late. Yeah. So all of a sudden you see the difference of what 3 points makes. And I think not just the points, but the confidence they'll give the team. It's the manner of victory. All of a sudden that dressing room is going to feel a lot better now, both for Kibu as well as the players. And the only thing missing is, if they were in Kochi now, there would be nights of celebration now immediately after the game. We wouldn't be able to get out of the stadium if we were there. And so would we. I'm pretty sure there is a celebration going on in Kochi while being socially distanced. Phil, Bengaluru FC, certainly conceding goals is an issue, but now they haven't kept a clean sheet in their last 9 games. It's worrying signs for Bangalore, you know, and it's one of them where I expect Musa to come out there, you know, and talk to us after the game. It's part and parcel of the job. When the going gets tough, you just still face the cameras, you still face whoever's wanting to ask a question, you know, because that's part of your job now. If he's going to be the head coach, not the interim head coach, if he's going to be the head coach, you've got to come out and say what he thought the reasons were. And to be fair, it's one of them horrible nights where he could have won it and then 15 seconds later he lost it. So it's a horrible night for coaching, because you think, I either go back to the water and drink or I pack it in. And you've got to be strong enough to keep going back to the water and drinking it.
firecracker of a game today, but let's look at tomorrow's game. We are in for a firecracker again, where ATK Mohun Bagan take on Chennaiyin FC. This is a big game, Prad, especially because both these teams are coming into this game after a frustrating draw in their previous respective games. Yeah, I think so. If you look at the way ATK Mohun Bagan's second half of their season has gone, they won't be happy with it. There's been a couple of losses, a couple of draws where they, you're expecting when they're 1-0 up, they'll see out the game the other night, and they haven't managed to. So they need to start pick up a little bit of momentum. Although they're in the top four and they're comfortably in there, a few more games of that, and people will start to not worry about playing them as much. And Chennaiyin, I think they desperately need to start winning games. I think if Chennaiyin win that, they're going to the top four, which is great news for them. But ATK Mohun Bagan have got to have the ambition to finish one. And if they've got to finish one, they've got to win that. All right, my oracles. Can I have a prediction for tomorrow's match? Brad, you want to go first? Well, I think if ATK Mohun Bagan score first, I think they'll win it. Well, I said 1-0 at half-time, and then I said Kerala Blasters 3-2, so I've got the result right. I got distracted by your shirt, so yeah. You got a party shirt. I'm going to go say ATK Mohun Bagan 2-1. ATK Mohun Bagan 2-1. Yeah. All right then. Well, okay, who scores tomorrow? Let's make this more interesting, right? Well, that's the thing. I think with Chennaiyin, that's always the question. It's like, who's going to score? Because they play all the good football, and then whether Jakub Silvestre starts, whether Isma starts, Shankar starts, they create chances, but they're not scoring enough goals. So it's almost as if you need an ugly goal, whether it's like from a set piece, where it's a deflection, something to just kickstart them at the start of the game, and then I think they'll probably get something out of it. And the warning signs for Chennai, Krishna's not had a sniff in 2 games, so he's going to come to the party tomorrow. Well, that's tomorrow, but tonight was all about the Kerala Blasters, the big southern derby, where the Kerala Blasters were trailing by a goal, came in the second half, 73rd minute, Puttiya, the super sub, getting his first goal in the Hero ISL, and then Rahul KP getting his second goal. What an absolutely smasher by both. Hope you guys had a good time. Good night. Hyderabad and Odisha were the new kids on the block in the Hero Indian Super League a year ago. Now they're firmly established. But while Odisha are stuck at the bottom of the table, Hyderabad could be heading for the playoffs. Who have the initial possession. They bring you all manner of statistics during the course of a game. The possession, the number of tackles. And that was another one I was looking at with Hyderabad. Ashish Rai has had the most passes in the team. Sana Singh has had the most clearances in the team. And Akash Mishra, he's had the most, what has he had the most tackles in the team? So they spread it evenly across that back line. Another Ashish Rai cross ball in, it's an enticing one. They've made a hash of this one. It could have been a penalty, it could have been anything that could have hit the arm of the defender. But not great goalkeeping, it has to be said. Here we go. It is Liston. He pulls it in, and it's 1-0 Hyderabad. Hallie's got his 4th of the season, and watch out for the celebration. Liston the assist. Hallie the goal scorer. Again. Look at that for super skill again from Ashish Rai. And there's another bit of super skill. It's not gone into the net.
Aridani was close to goal number 7 of his season, but that was lovely again from Ashley Fry. Still they keep it going with Diego Mauricio. The ball is in, and there is the shot, which is well covered by Katimani. Aridani, another good ball as well. Could be number 2 here. It's Halle. It's off the upright. It should have been 2-0. Well, it was exciting, and Odisha can breathe again. 2-0 might have been too much. Don't find any of them. So the prod out comes to Liston, who, as we all know, is ready to take everybody on. He looks up, he spots the possibility. He's taken in stride. Is this number? No, it's not number 2, but the save had to be made by the goalkeeper. Arshdeepan was. Great play. That is absolutely fantastic from Hyderabad. It is Lister, and he fires it in brilliantly this time. He's obviously been practicing. He's been on the training ground, hitting free kicks like that one, which really did extend Ashdeep. That would have been the best free kick of the season. By a country mile, John. By a country mile. I think we've only seen 2 so far from outside the box, but he struck that well. Just a little bit too close to Arshdeep, which means he could fist it away to safety. Just a reminder that Odisha do have 3 players on 3 yellow cards. Gaurav Bora being one of them, Stephen Taylor another, and Henry Anthony. Oh, wow, they are back level. And that man Cole Alexander we were talking about has taken everybody by surprise. Well, we said that they aren't out of this at all, Odisha, because when the scoreline is just 1-0, you're always in a game. He just buries it in that bottom corner for his 2nd of the season. That's a good ball, and he's onside as well. That was a really good ball out here. Rakesh. Chance! Well, he's on the full, but he's put it well wide. But it was a big chance for Jerry to end that goal drought. Initial pass is charged down. Is this one too long? Oh, brilliant skill from Diego. Diego racing into the area. Can he pull it back? Can he squeeze it into the net? It's off the underside of the crossbar. And then away by Sana Singh just in time. A couple of yards out. Back they come again. And it's over and out. And how did they escape there? Poor old Onwu. He still can't find the net. What a couple of chances that was, by the way. I don't know how that stayed out. And then that ball back in, is it just a fraction too high for Onwu? I think he's...